Good evening, all of you. I am CA Kashinath Pathare, Chairman of Pune Branch. Welcome all of you on webinar on clause by clause analysis of Finance Bill 2023. Today we have our Direct Tax Committee Chairman Chandrasekhar Chitle sir, Indirect Tax Committee Vice Chairman Dr. Raj Chawlaji, and my colleague branches Chairman Anand Peshre, Solapur Branch, Umesh Mari, Sangli Branch, Sushant Gunle, Kolhapur Branch, and Sam Gite, Satara Branch. I once again welcome you, all of you. Our today's speaker, Advocate Kapil Goyalji, will join soon. So meanwhile, I request our Direct Tax Committee Chairman, Chandrasekhar Chitle, to give view on direct tax. No, we will await Kapil Goyalji for his views on direct taxes. As far as today's webinar is concerned, we are really very lucky that Kapil Goyal has agreed to address. So we will come to direct tax portion subsequently. Before that, let me wish birthday greetings to Umesh Mari, chairman of one of the coordinating branches. And I wish him happy and prosperous year ahead. And really, he has joined, avoiding his birthday celebrations. He has joined this particular webinar. Friends, as far as direct taxes is concerned, all of us are practicing indirect taxes, the majority of chartered accountants. But in the recent past, the ICI has taken up initiatives in the area of sustainability. And we are really fortunate that this particular Sustainability Reporting Standards Board has been headed by eminent CA Dr. Sanjeev Singhal-ji. And he has brought laurels to the institute. And I am sure that chartered accountants will also be known as the experts in sustainability. As far as this union budget is concerned, it has certainly made various announcements in this particular direction about the green revolution, green India. So ahead of this clause by clause analysis, for a few minutes, let me request Chairman SRSB and also Chairman of Auditing and Assurance Standard Board, CA Dr. Sanjeev Singhal, to tell us about various initiatives which are taken up by the Finance Minister in this union budget relating to sustainability and green initiatives. Over to you, Sanjeev Singhal-ji. Thank you, sir. Thank you. The Honorable Chairman of the Direct Taxes Committee, Chandrasekhar Chitle-ji, the Honorable Vice Chairman Direct Taxes Committee, with whom I am in this webinar room, CA Dr. Raj Chawlaji, the Honorable Chairman of the Pune branch, Solapur branch, and Sangli branch, and also particularly the fact that Umesh Maliji, the Chairman Sangli branch, is celebrating his birthday but still is with us. So that's really remarkable. And the speaker who will join us, and good friend of mine, CA Kapil Goyalji, who is an expert in direct taxes. Friends, as the Chairman Direct Taxes, Chandrasekhar Chitle-ji mentioned about the impetus on sustainability. And at times we wonder that why there is so much talk about sustainability. Sustainability is beyond just being green. It also implies growth. If you are not sustainable, sustainability is what? It's the ability to sustain. If you will not sustain, there is no question of growth. That is why it's almost the fourth year in succession that the finance minister is putting a lot of emphasis on a green growth or a sustainable growth. What is a green growth or what is a sustainable growth? A sustainable growth or a green growth is one which ensures that our economy grows without compromising the needs of the future. What will happen if we compromise with the needs of future? Recently, we have seen the incidents of Joshimath. And now the government is examining, could there be an implication on Manali or Shimla? And there's an expert report in the today's Times of India saying that the entire Himalayan region is facing issues. There could be issues of sliding, and we could see higher number of earthquakes also. What is causing it? When we compromise on the future and exploit the resources in a manner that they can't sustain in future, that's why it happens. C&AG has undertaken a massive exercise of natural resource accounting. And a natural resource like iron ore
is there only for next 20 years. Now, iron ore is required for growth. In India, it is there only for 20 years. So what will happen in future? So there are many resources. They have looked at the major minerals and some of the minor minerals, and some of the resources are there only for 20 years, 30 years, 50 years. So it is imperative that we focus on green growth. Our Honorable Prime Minister has given an acronym, LIFE. LIFE stands for lifestyle for environment. For example, are we consuming the resources which are perishable in nature, or are we taking electricity which is renewable in nature? Similarly, if there is a water consumption, is something being done to replenish the water table through water harvesting or through other measures? So our Honorable Prime Minister has given the clarion call in the COP26 in Glasgow that by 2030, India will reduce its carbon intensity by 45%. That's a very ambitious target, but together we need to make it happen, because we are already experiencing plus 1.2 degree temperature. And if we continue in this manner, in next 5 years, we'll hit that threshold of 1.5 degree. And if that happens, the temperatures will rise, and a hotter weather is a wetter weather. There'll be floods and earthquakes anyway we see. There's a lot of focus by the government on green hydrogen mission. Almost 20,000 crore rupees is being spent on green hydrogen, because we know petrol and diesel is there only for a limited period. There's a massive transition from conventional energy to renewable energy. There's a lot of focus on solar energy and wind energy, because these comes from the renewable energy. Today, the limitation which is there is that this renewable energy cannot be stored. So the government is putting focus, and they are saying that we'll develop this capacity to start with 4,000 megawatt of, and they will do a viability funding of energy storage. If energy can be stored, Rajbhai, then we'll be able to store the solar power, and in the night also we will be able to use it. Recently, I went to Aurangabad and I stayed with one of my friends. They use for their geyser solar power. So I asked them that how do you do it? They said we store it, that water, and it is good enough for the whole 24-hour needs. There is a green credit program also which is being talked about in this. So what the government wants is that if somebody is developing negative carbon emission, so they should be able to monetize that. For example, if somebody is processing municipal waste, we know in Delhi there is so much of municipal waste, there's 30 lakh ton at one site itself. If somebody can process that municipal waste and generate power, then they should be able to sell that power and also able to sell that green credits. I'm told that the company has 6 lakh tons of green credits with them. So it's a scheme to monetize. PM has also talked about a scheme and beautifully named PM Pranam. That is Pranam from the PM side to the Mother Earth. And it stands for PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Emulation of Mother Earth, which will incentivize states to reduce the use of fertilizer or to look at alternative use of fertilizer. Rajbhai, you would appreciate that our Sadhguru ji, who is focusing on save the soil, has mentioned that soil is there only for next 60 years. Mitti is there only for next 60 years. So what will happen after that? So these fertilizers, pesticides are also responsible towards the degradation of soil. So if we can really, develop the alternative uses of fertilizers, then that will help. The finance minister has also come out with a very innovative scheme, Gobar Dhan, that is converting the Gobar into Dhan. So there are 500 new waste to wealth programs, because gobar today is not productively utilized. But if this can be converted into biogas, and if that can be sold, and they are planning to make it mandatory that at least 5% usage has to be of compressed biogas. Similarly, there's a scheme called MISTI, Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Income. It is important to protect our coastal line. And if we can grow mangroves, this will also help in reducing the cyclones, the impact of floods, etc., and the rehabilitation which is required for those people. The budget also talks about Amrit Dharohar, coastal shipping, and a very important initiative of converting the diesel and petrol vehicle or replacing them with the
electric vehicles. So the government has provided funding that the vehicles which are there in the government, which are petrol or diesel, they'll be replaced with the electric vehicle. But there also, there is one caution that even the electric vehicle today are charged with energy, which is 75% is coal-based. So actually, it is not pure electric. If it is done through renewables, then this is where it will help. So these are some of the areas of focus in this union budget. I can link them to the professional opportunities also till the time the Honorable Speaker Kapil Goyalji join. And if he has already joined, Rajbhai, please let me know. Our Sustainability Reporting Standard Board has come out with 17 videos saying that how each of the 17 Sustainable Development Goals presents a professional opportunity for our chartered accountants. And friends, your Sustainability Board of ICI has also come out with 16 social audit standards, which are the first one in the world, which talks about how the NGOs can raise money from the instrument of stock exchange, which is called as a social stock exchange, and thereby zero coupon, zero principal bonds can fetch the money to the NGOs. There are many such initiatives. There are certificate courses which we have launched. 15 batches have been done. And we invite you to explore this world of sustainability towards building a healthier, happier, and safer planet. We all need to come together. Fortunately, unfortunately, we have only one address, and that is Mother Earth. And we can't change this address. Whatever money we may have, but can we change this address from Earth to some other planet? No. If no, until the time we can't, it is our duty that we leave a greener Earth for our future generations. And contribution from each one of you is important. And I'm inviting you to convert into a professional opportunity. But first, to start with, maybe use both sides of paper. Use LED lighting in your office if you are not already doing it. To the extent possible, use renewable sources. Switch off the lights when they are not in use. Use energy efficient equipment, 5-star rated, etc. And then learn about sustainability and earn from it. This will take you to the next level. And those days are not far off. In fact, today only UNDP was talking to us to develop integrated statement, which combines the financial statement as well as the non-financial statement. In 5 years from now, I am of the belief that the financial statement will be replaced with integrated statements, and the learning of sustainability will prove quite handy. So it's time, as chartered accountant, we have always been very proactive. Time that we acquire knowledge of this sun-rising area as well. So Rajbhai and Chandrasekhar Chetleji, thank you very much for giving this opportunity, unscheduled opportunity for interacting with the members and sharing some information that I had about sustainability. Thank you. Sir, you are on mute. Yeah. Chitle, sir, So thank you, Sanjeev bhai. We thought that there is some time gap available before we invite the faculty to join. And I'm sure that your presence has really lent distinct credit to this particular webinar, because sustainability initiative is one aspect where, as we are informed, that maybe 1,000 listed companies are now mandated to report ESG reporting, environment, governance, and society. And social. So, social responsibility. So, these are the aspects. Rajbhai, just check whether this Kapilji has joined so that we can move on to budget. And till the time he joins, since you have mentioned about this mandatory reporting. Triple bottom line. Yeah, right. Yeah, I've been told that he may take about 5 minutes. So that gives so me an please tell us about this triple bottom line reporting. Yeah. Yes. So this 1,000 companies are required to report on BRSR, Business Responsibility and Sustainability Reporting. And it is nothing but this triple bottom line, which Chitle sir is talking about. What is this triple bottom line? So far, we have been looking at profits. Now it says 3 Ps. Don't look at just 1 P. Also look at 2 more Ps, which is planet and people. And please change the order to planet, people, and profit. And why? Because if this planet will survive, then only people will survive. If people will survive, only then one will be able to generate profit. So don't look at profit, people, and planet. Look at planet, people, and profit. And I will like to add 2 more Ps to it.
One is peace and second is partnership for goals. In fact, there And is third is SDG profession. 70. Yes, And third is sixth is, profession. Yeah. yes. So 6 P's, very good, very good. Profit, so planet, people, profit, peace, partnership through our esteemed profession. So if we combine this, then and I tell you, and our honorable president was sharing that one day at airport he met one of our member, and that member came to the president, sir, you know that I am working in BRSR. The president had extensive knowledge about BSR. Yes, I know that it's a growing area. So I'm working for a company. President asked him, how much fee you are getting? That member said, sir, one. President said, only 1 lakh? Because this is for new companies, large company. She said, no, sir, it's not 1 lakh. It's 1 crore rupees of fees that I'm charging for the BRSR advisory. Because without being sustainable, without being green, today the investors, the lending institutions are not willing to give you money. Particularly the international institution will not lend you money. And now RBI is also talking to the banks in India that make green funding as the priority sector lending. So when that happens, the cost of funds will go down. Assume a company which takes a loan of 1,000 crore. If their cost of capital can come down by 1%, that means their cost will come down, Rajbhai, by 10 crores. So this will simply add to their profit before taxes. So while this will add to your profit, at the same time, this will be responsible growth. Today, for example, if it's a polluting industry, government will not allow you to function. So from where you will earn profits? So BRSR is one such vehicle where the companies will be reporting about their ESG initiatives, and the institute has also developed a 300-point scoring mechanism, which we call as sustainability reporting maturity model, which is again the first one in the world. And one can use it for giving advice to the companies. And this model is a wonderful model, and 2 versions have been released. So friends, this new world opens the new vistas. And when the knowledge is with few people, then premium is also there. So be a first mover. Join those about 1,000 odd members who have joined this bandwagon of sustainability, and I'm sure that you will be richly benefited. Thank you. Yeah, Sanjeev bhai, there are another 5-10 minutes before Kapil sir joins. So recently, SEBI has launched social stock exchange, and under your leadership, the entire code of conduct, the rules and the provisions were drafted at ICI office. So maybe it would be of great interest for the members ahead of Sure. Kapil Golji to also understand about the social stock exchange, the concept and the professional opportunities. Sure. Thank you, Chairman, sir. In fact, this is another area where ICI was able to, lead the initiative. And this is the first one in the world when 16 social audit standards have been developed. Now, what is this area? What is the stock exchange? We have all heard that commercial organization raising capital, whether an equity capital or a debt capital from the stock exchanges. But our Honorable Finance Minister in 2019 thought of coming up with a social stock exchange, where there are 34 lakh NGOs in India, and out of which 1.15 lakh NGOs are registered with the Niti Aayog Darpan portal. Now, the NGOs generally, have to spend a lot of money and efforts for raising the funds because these are charity funds. And charity funds are non-commercial fund, very difficult to get. For example, if I had to ask Rajbhai, I want to do this charity, give me money. Now he knows that this money is not going to come back. There's going to be only a social return. So he'll be apprehensive, but tell me, what will be my benefit? I have to explain to him it's a social benefit. Now, there is a vehicle that is provided to such NGOs, and this is social stock exchange. In Mumbai, the Mumbai Stock Exchange, the social stock exchange is already functional. In principle, approval has been given to the National Stock Exchange for this setting up social stock exchange. There are 2 types of organization which can list on this social stock exchange. One is not for profit. Second is for profit. So you can be a for-profit social enterprise also, provided at least 67% of your activities
are with the intent of which has a society or social as a primary intent. And there are 16 areas which have been developed on the lines of 17 sustainable development goal. You can pick up any of those areas and you qualify to be listed on that social stock exchange. You may just register on the social stock exchange without raising money. That will give you more, transparency, and the donors would see you as a more transparent organization, because these will be reporting their financials on accrual basis. A social audit will also be done for them. And then, if you are a not-for-profit organization, you can raise zero coupon, zero principal bond, and soon we may also come up with a social impact bond. For example, in Rajasthan, the state government took up a project on literacy, improving the literacy among the women in this state. And Rajbhai, there is a funder which came. They said, if you can achieve this target of increasing it by 10%, I will not only reimburse the cost, I'll also give you a profit margin on that. So this is how this impact funding can also come in, and for-profit enterprises, even equity funding is possible. So this was in brief about this, and now I don't want to stand between the learned speaker Kapil, who also happens to be a good friend of mine, and the viewers. I just filled in this gap through the sharing knowledge on these newer areas. Over to you, Rajbhai. Thank you, sir. Kashinaji? Sir, Kapil sir is not joining. Okay. So, at the outset, on behalf of the Institute of Chartered Accountant of India, extend a warm welcome to CA CV Chitle sir, Chairman Direct Tax Committee, CA Sanjeev Singhal ji, Chairman Sustainable Board, CA Kapil Goyal ji, our eminent speaker for today webcast, CA Kashinath Pathare ji, Chairman of Pune branch of ICI, CA Anand Peshwe ji, Chairman Solapur branch, CA Umesh Mali ji, Chairman Sangli branch, and happy birthday to Umesh bhai, CA Sushant Gundale ji, Chairman Kolhapur branch, and CA Sham Geete ji, Chairman Sitara branch of ICI. Direct Tax Committee of ICI, as partner in nation building, always engaged in the matter related to direct taxes and makes representation to the government, Central Board of Direct Taxes, and other appropriate form from time to time on various legislative amendments and issues concerning direct taxes. One of the main activity of committee is to disseminate knowledge and honoring skill of the membership in the area of direct taxation. Our today topic of discussion is on close by close analysis of the Finance Bill 2023. The Union Budget 23-24 contains significant direct tax proposals to provide tax incentive to startups, micro enterprises, cooperative society, and the salaried taxpayers. The budget also contains proposal to remove difficulties faced by taxpayer and measures to augment tax revenue and deter tax avoidance. The in-depth discussion on the Finance Bill 23 will be discussed by the following dignitaries. I would also like to appraise that the Direct Tax Committee of ICI is going to release 10th publication tomorrow on 73rd annual day of ICI, which will be held at Vigyan Bhavan, New Delhi. The following publication will be released tomorrow. First, treatise on report of income tax dues, Handbook on Taxation of Private Trust of Income Tax Act 1961, Handbook on Income Tax Collection at Source, Handbook on Estimated Income Scheme under Income Tax Act 1961, Handbook on Disallowance of Expenses under the head Business or Profession, Treatise on Section 194R under Income Tax Act 1961, Handbook on FAQ on House Property under Income Tax Act 1961, Handbook on Landmark Judgment on Income Tax by ITAT 2022, Handbook on Landmark Judgment on Income Tax by High Court
2022, Handbook on Landmark Judgment on Income Tax by Supreme Court 2022. So I am thankful to my chairman, Direct Tax Committee, Chitleji, for making this possible. To earlier, he has already issued 4 publications of our Direct Tax Committee. Again, 10 publications are coming tomorrow. So, heartiest congratulations, Chairman Sir. The Institute of Chartered Accountant India cordially invite you to the 73rd annual function of the Institute on 7th February 23 at Vigyan Bhavan, New Delhi. The annual function continues the legacy of the Institute in recognizing and celebrating the best performing students, regional councils, overseas chapters, and branches. It also gives an opportunity to celebrate ICI's achievement and talk about new initiatives. The function will be graced by the presence of Shri Arjun Ram Meghwalji, Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture. The function will be hold a special CP session for 2 CP hours on the subject Union Budget 23 analysis by CA Dr. Girish Ahuja ji. The celebration will start from 3:30 p.m. So all the members are requested to join that celebration. Over to Kashinath ji. Thank you, sir, for your guidance. Now I request our Direct Tax Committee Chairman, Central Council Member Chandrasekhar Chitla, sir, to share their views on the group. Thank you, Kashinath. I would not like to talk anything on union budget. We already have faculty available. Honorable Vice Chairman Chawla ji, Honorable Chairman SRSB Dr. Sanjeev Singhal, Chairman of Organizing Committee CA Anand Peshwe, CA Kashinath Pathare, CA Sushant Gundale, Birthday Boy CA Umesh Madi, and all of you, ladies and gentlemen persons. It's my pleasure to welcome the faculty for this particular session, advocate and who also is a chartered accountant, Kapil Goyal ji. Friends, today there are 6 days from the presentation of finance bill. I am sure that everyone from the chartered accountants fraternity has read the finance bill. But there are some personalities, some legal luminaries. If they address us, we wonder whether we have at all read the finance bill. And we have with us eminent personality like Kapil Goyal ji, who is apt in immediately reacting to these provisions. So rather than, and as far as Direct Tax Committee is concerned, adequate introduction has been made by our Honorable Vice Chairman, CA Dr. Raj Chawla ji. So I would not like to stand between you and Kapil ji. Thank you. Thank you, sir. Our today's speaker, Kapil Goyal ji, will joining within few minutes. So I request once again, Chitla sir to Direct Tax Initiative, Direct Tax Committee, please share Direct Tax Committee initiative to members. Chitla sir, I am audible. Yes, you are audible. Please share Direct Tax Committee initiative. No, I'm not understanding why you are not doing the going by minute. Just tell to introduce Kapil Goyal and let him start. Forget about minute by minute, this by minute. Sir, not joining. Okay, let me introduce Kapil Bhai. Actually, we have heard on several occasions CA and Advocate Kapil Goyal ji. He is expert in taxation. He appears before High Court and Tribunal, and he is very kind enough that whenever Direct Tax Committee or any other branch invites him on a professional forum, he very kindly consents to guide us on various matters. His interpretations are really wonderful. And in taxes, if two chartered accountants sit, there are 3 meanings which emerge from a particular provision. And we have Kapil Goyal ji who will tell which of those interpretation is most appropriate, along with the case law and the logic for the same. Over to you, Kapil Bhai.
Sir, there is some technical problem. Kapil sir is not joined yet. Okay, then I would request technical team to assist Kapil Bhai to join. Meanwhile, I request Raj Chawla ji. नहीं, हाँ, okay. Meanwhile, I request Raj Chawla ji, Vice Chairman, Direct Tax Committee, to please give Direct Tax Committee initiative briefly till Kapil sir joins. No, let me also appeal the audience that after presentation of finance bill, it is customary for the direct tax committee to make post-budget representations. So there may be certain aspects on which you would like to institute to represent. Let me tell you one aspect, that in respect of valuation of inventory, a particular profession has been given the authority to do that valuation. Now, as you are aware, the government itself has come out with the profession of registered valuers, and they are making separate training for the purpose of those valuers. There is also examination. So, institute is going to represent that it should be valued by registered valuers rather than any particular professional, because registered valuers are particularly trained for this purpose. And you must be aware that various chartered accountants have registered as valuers. In respect of equity valuation, also we are going to request that it Sir, should be Kapil by sir have joined. registered valuers. Sir, Sorry? Kapil sir Kapil Bhai has joined. Yes. Kapil Welcome, Kapil Bhai. Welcome, Kapil Bhai. Hey, thank you, sir. Sorry, firstly, thank you, Chawla. Namaskar, Chawla ji. Namaskar. Namaste. Sir, we said that chartered accountants have read the finance bill, but after listening to you, we wonder whether we have at all read the finance bill. So we are eager to know that. You are What a sweet gesture, sir. Sir, is the voice problem properly coming? My voice, sorry, मेरा नाम नीचे ठीक से नहीं आ रहा शायद. मेरे बेटे का नाम आ गया है ये. Yes, sir, no problem. आपको patience है, sir. Sir, on behalf of Direct Tax Committee, I welcome you Sir, on thank you. this webinar. Yes, sir, thank you. Today we have Advocate Kapil Goyal ji. He is a practicing lawyer at Supreme Court, High Court and Tax Tribunals. He is a commerce graduate and qualified CA. Kashinath Bhai, let us spare that. Let us start with the section because we are already late. Yes, sir. Yeah. We have. So I request Kapil Goyal ji to start the session. Thank you, Kashinath ji. I believe when I take your name, brother, I come closer to Kashi Vishwanath. So and you have always a very smiling and a dear, charming face. And in my last meeting with you at Pune, I am still relishing that hospitality which you have shown to me. And also my greetings to the Chitle Saab, the chairman of this committee, and my very good friend and a very religious man. I always say Chawla Saab, our very good friend, and all of the other co-panelists and my all attendees who have joined me in this virtual webcast organized by our Institute of Chartered Accountants of India and Direct Tax Committee. Firstly, I apologize for being late. I told the reason that I have to come from High Court in my office, and nowadays in the road it's a what do you say, ordeal. Chawla ji, I have to come from High Court to my office in Rohini. So that's why I got late, and my number in the court came late. So anyhow, कई बार क्या होता है कि परमात्मा भी हमारा परीक्षा ले रहा होता है कि हम हमने कर्तव्य के प्रति कितने दृढ़ हैं और what do you say, how much determined we are towards our things. And I always admire Chitle Saab's what do you say, love and affection towards me, and I don't know what he see in me. I always say, Chitle Saab, I am not that good reader of the budget. You have said some flourish words about me. I always very humbly submit it that I don't know what you see in me. I still don't know how much justice I do when I speak on the budget and other things. But it's definitely I believe some kind of special affection and what you say, extraordinary affection towards me, which makes you to express your humble what you say feelings about like that. So I don't possess such qualities, sir. Sorry. You were saying something. Only in your absence, Sanjeev Singhal, your good friend, was there. So we had some discussion on sustainability. So the time was consumed. I see, sir. I see.
So, sir, Chawla ji, what is happening is that this particular budget, Finance Bill 2023, had in when we heard Honorable Finance Minister and when we heard the budget speech, and when all of us were listening to the contents of the budget speech, so it came to our mind, Chitle ji, that there is something, मतलब अभी तो 7% growth का उनको बोला है कि 7% growth होना है, 7% growth in this year, and this is an Amrit Kal budget, and based on Saptarishi sense. So these were the high points of the budget. I believe they are really very good, and one should admire it. That this is an Amrit Kal budget, Chitle ji, and based on Saptarishi sense, Yes. and 7% economic growth, and what you say is that 5th largest economy we are. So green growth, all these are very high sense of the budget. But one thing is very important, sir. At the end of the day, I believe it's always a perception how you look at the budget. It's my humble feeling, sir, that all of us may have our own individual sense of perception. All of us can read the budget in our own style and own sense of perceptions and own thoughts. So one should respect everybody's thoughts. And it is like this, that a small and medium enterprise can read the budget, and a small entrepreneur can read the budget from his own angle. A high large entity blue chip company can have its own angle. And what you say is that when we chartered accountant, me like person who is a tax litigation lawyer, I always say I have a very different approach. And somebody can rightly say it's a very typical approach. So a person who is dealing with litigation might have a different approach. A person who is giving tax consultancy might have a different approach. A person who is collecting taxes and administering the tax laws can have a different approach. A person who is businessman and giving taxes to the government can have a different approach, sir. And his own level can have a different approach. So one should always keep in mind that an economist, sir, finance reader of budget can be a great economist also, which I am nowhere near to that. So point is this, sir, we read the budget from our tax angles, from our chartered accountant angles, from our tax consultancy angles, sir. So that is how we generally, as a typical chartered accountant, I believe, read the budget. And as I see that budget always is a epochal event. Budget day is a epochal event, and it is like a festival sometimes. And many times. So see, I believe when the budget has come and last, say, 5-6 days seminars are going on, Chitle ji, many people are in that. आपके अभी institute में भी बहुत ज़्यादा इस पे debate हो रहा होगा कि that new tax regime versus old tax regime. So this has already created lot of attention, entire media of the country, that how this new tax regime is beneficial and how this is not, to whom it is beneficial and to whom it is not beneficial, sir. So I believe, Chitle ji, it's a as far as Kapil Goyal is concerned, I find myself very little to say on this kind of proposal, because it is somewhere arithmetics, it is somewhere a sense, what do you say, that you have to make out comparisons with the figures and then decide which regime suits you. But for me, as a litigation lawyer, to say that which regime is a good regime will be too difficult for me, and I humbly express my apologies that I will not be able to share too much on new tax regime versus default tax regime or old tax regime. So already I was listening to CBDT chairman, we were reading in some papers, they are saying that they will make some calculator on the websites which will help taxpayers to decide whether they have to go to new tax regime or whether they have to be in old tax regime. Are you getting, Chitle ji? So yes. Calculator का सुविधा दिया जाएगा. तो ऐसा सुनने में आया है. अभी पर अपना ज्यादा उस पे वो नहीं है. मेरा ऐसा प्रावधान पे अपने को कम ही समझ में आता है सब. So my submissions will be made majorly on the substantive provisions, or the provisions which create some kind of changes the direction or creates new direction or adds to the direction. To see, I have already humbly submitted at the outset that to read a budget is a perspective oriented situation, and sometimes it's individualized perception which matters. So with due respect to all my participants and with all regards to everyone's views, I humbly keep my views as a student of law.
So I said this budget is in Amrit Kal budget, sir. This budget is based on Saptarishis, and Saptarishi I was not knowing prior to this. When I read Madam saying Saptarishi, sir, I believe they are Ramayan Saptarishis, which the values they have taken in the budget. So green growth and all these things are there. And next generation in income tax, they are saying that we will have a now next generation income tax return forms, Chitle Saab, next generation ITR. And they are saying that they will do less scrutiny also. And they have created some very good provisions in cooperative sectors to encourage cooperative sector. Cooperative sector is very eminently present in South India and Karnataka, Bangalore, and in I believe in Goa, Pune, Maharashtra, some part of Bombay also. This cooperative sector is, sir, in your side, Chitle Saab. So they have given some good impetus to this cooperation sector. So they are kept in high good mood, jolly mood. I saw budget from section 2 to section last sections when they decriminalized one provision, na sir. So starting from section 2 to section 276A and all those sections, 269 SS. So what it comes, Chitle Saab, if I summarize and give a bird's eye view. So when we compare with the budget speech and the changes made in the finance bill, changes are enormous. Changes are enormous, sir. And changes are plenty. So I say it like this, sir, that when we start from section 2 and when we go to the definition clause of the section 2 in the Income Tax Act, in which first change, which is noticeable change, is, sir, section 2 clause 28 capital CA. Now, what is this change about? This is a definition clause of the Income Tax Act section 2 in which a clause has been added, section 2 clause 28 capital CA. Now, this clause, Chitle Saab, deals with the definition of joint commissioner appeals. Now, this is a new authority. What do you say? Parallel authority, appellate authority, sir, which has been created, Chitle Saab, in the Income Tax Act 1961. And there has been an hitherto CIT appeal, which is popularly called as first appellate authority under the income tax hierarchy. Now, what is this joint commissioner appeal? This joint commissioner appeal can be JCE or additional commissioner appeal. Now, they say that in the income tax, already we have joint commissioner people there. But now there will be a posting and there will be a separate authority known as joint commissioner appeal, but which will work parallelly with CIT appeals. It is not like this. This is below CIT appeal. Am I with you, sir? Chitle Saab, are you with me, sir? Yes, sir. So this joint commissioner appeal is an additional appellate authority and in operating parallelly to first appellate authority, that is CIT appeal. And the purpose of creating this is that the legislature and the parliament and the government has rightly at least understood this pain that which we have expressed many times, that our cases are not being decided in the CIT appeal in the expeditious manner. So to see that the small cases can be disposed of by joint commissioner appeal. When I say small cases means the cases which are decided by the authority of deputy commissioner and below, sir. Now you can't say that a case which is assessed by joint commissioner cannot go to joint commissioner appeal, sir. Only the case which are decided by deputy commissioner or below authorities can go to, sir, joint commissioner, and provided they are not passed with the approval of joint commissioner and higher approval authority. Are you getting my point, sir? So the search cases in which search assessments are passed, Chitle Saab, with the prior approval of the range head would not be able to go to the joint commissioner appeals, A, and only those orders will be able to go to the joint commissioner appeals which are passed by the authority below which are passed by the authority deputy commissioner or below that. So the practical idea behind this joint commissioner appeal seems to be that they will ask joint commissioner appeal, which they say that 100 people they will firstly post, which they have said in the budget speech and somewhere. So the idea is this, that to just accelerate and expedite the process of first appeal disposal, they have created this parallel authority. Somebody was asking me that joint commissioner appeal के ऊपर CIT appeal होगा या joint commissioner का appeal का order ITT जाएगा, sir. Joint commissioner appeal का order tribunal जाएगा. Am I right, sir? Chitle Saab? Chitle Saab, are you with me? Yeah, yes, sir. तो जो ज्वाइंट कमिश्नर अपील का ऑर्डर ट्राइब्यूनल जाएगा, सर जी. सो पॉइंट इज दिस कि दिस अथॉरिटी, इसके साथ अमेंडमेंट्स पूरा इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने जहां पर सीआईटी अपील वर्ड था उसके साथ ज्वाइंट कमिश्नर अपील वर्ड भी लिख दिया है.
And what they have done is they have made a serious change in section 2 clause 28 capital CA. They have given definition of joint commissioner appeal. The serious change to be noteworthy is, sir, section 246 also. In section 246 subsection 1, they have defined which kind of orders will be able to be assailed before joint commissioner appeal. And they have also said the pending cases before CIT appeal, which are otherwise eligible to go to JC appeal, can go to joint commissioner. I hope this is clear, sir. Yes. So I thought, sir, Chikle sir, one suggestion can go from the, if you can note humbly, sir, if it is possible, that one suggestion should go to the, to the government and the Ministry of Finance from our side, if it looks appropriate and worthy, that they have one problem they have sensed is this, that there is backlog of cases at first appellate authority. So they have decided to create this additional appellate authority. But unless they recognize one thing, sir, that CIT appeal and first appellate authority should have proper power, which courts have recognized hitherto, to decide my stay applications, demand stay applications, which rarely we have practically seen. Ki abhi bhi faceless appeal mein I can't file any stay application separately to the CIT appeal, sir. So I believe one suggestion must go to from the direct tax committee, if it is possible, that when Justice Padiwala in case of Harsh Deepak Shah has recognized and acknowledged and has said that in section 251 there is already there is power to the CIT appeal to decide stay applications. So this power should be recognized in the act clearly, so that there is a proper window in the faceless appeal scheme. See, ultimately this joint commissioner appeal, I believe, also will have to operate faceless manner. Somebody was asking me how this joint commissioner appeal will operate. My hunch was this, that it because when you are deciding CIT appeal in a faceless appeal scheme, then this also has to go in faceless manner. You can't visualize that these small cases can go to joint commissioner appeal to whom you can personally meet and appear. Sorry, like that. Somebody was asking me in a seminar, a chartered accountant, can I meet that joint commissioner appeal and to personally represent? I'm doubtful, sir. I'm humbly doubtful. So there are three important takeaways. Joint commissioner appeal is an authority, which is an appellate authority, which is operating parallelly to the CIT appeal, and which will also have the coterminous power as CIT appeal was enjoying. And those small cases will come to it, like CBDT chairman has said, TDS cases, 201 cases, section 201 TDS default cases, sir. So all these type of cases are expected to be given to the joint commissioner appeals, sir. So section 2 clause 28 capital CA is, I have discussed section 246 also, sir, joint commissioner. Yes. Now I go to my another provision, section 2 clause 42 capital A. Short-term capital asset definition, period of holding wala point. Yeah, only that jurisdiction of joint commissioner and commissioner are exclusive, they are not concurrent. That commissioner also can decide small appeals. So, what do you say again, sir? Can you say again? Just it's a very important. No, the jurisdiction which is entrusted to joint commissioner, CIT appeals will not be able to decide those cases. I will tell you, sir. This is a very learned question, and you ask very, very learned question. See, it is written there, sir, in section 246, subsection 1, which is the new thing which they have added. They say any assessee agreed by any of the following orders of an AO below the rank of joint commissioner may appeal to the JC appeal against following orders, provided that no appeal shall be filed before JC appeal if an order referred to in this subsection is passed by or with the prior approval of income tax authority above the rank of deputy commissioner. Now, where any appeal is filed against order referred to in is pending before ITNA, CIT appeal, the board or an income tax authority so authorized by the board in this regard may transfer such appeal and any matter arising out of or connected with such appeal. So first thing is this case, joint commissioner appeal authority is only on the orders defined under section, falling under section 246 subsection 1. Am I with you, sir? Then second is this board has to transfer the appeal which are pending already from CIT appeal, which otherwise fall into 246(1) from CIT appeal to JC appeal. Now, then the jurisdiction will come to it. So I believe, sir, as far as your question goes now, Mr. Goel, is this authority of CIT joint commissioner income tax appeals will be operating concurrently with CIT appeal? It looks so, sir. It looks so. Yes. By the reason is this, because this is like this, that everything comes to CIT appeal
I don't know. They have not made any amendment saying that what comes in joint commissioner appeal will not come under CIT appeal. I'm afraid. Yes. Am I that is there? bet- Sorry. Yeah, that is better, because if after hearing say case substantially, then he says, sorry, I don't have jurisdiction, that issue will not come. That's what I believe. Your question was therefore very learned, sir. That am I rightly understanding what you are saying? Now, does it make sense that CIT appeal is a larger situation which has a jurisdiction on, let us say, all type of cases, but joint commissioner appeal is a authority which will have a jurisdiction only on limited type of cases. Yes. That is how it goes. Yeah. So CIT appeal will definitely have, and somewhere there is overlapping. Yes. So that board has to be, see, it cannot be like at the end of the day, my case cannot be decided by CIT appeal and joint commissioner appeal both, sir. That's to the point. So it has to be decided by only one authority. So it cannot be like this, sir, that my case has to be adjudicated by two masters, two judges, two arbiters. Yes. So I hope I am answering you, sir. Yes. Now, what happens if jurisdiction is with joint commissioner? If inadvertently appeal is filed addressing commissioner, then whether it will be irregular or it will not be considered, that also needs to be addressed. Sorry, come again, sir. See, they are saying that appeal from lower authorities should go to joint commissioner. Now, inadvertently, somebody may write commissioner also instead of joint commissioner. See, I believe, sir, that point is answered. See, ultimately, the business of allocation of the work, as per the statute, is to be seen by the department. Firstly, my filing might be not at proper, but otherwise my case goes to see. Like it is like this, that my case falls under the jurisdiction of joint commissioner appeal, or see, ultimately I believe, Dada, इसमें भी तो ऐसा करना पड़ेगा ना इनको कि केस को एलोकेट करना पड़ेगा. Yes. केस को ऑटोमेट, जैसे ऐसा तो नहीं होगा कि आपका केस अपने आप ही ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास डायरेक्टली जिसको डिसाइड करना है चला जाएगा. आई एम रॉन्ग और राइट? यस. So ultimately somebody has to allocate it ना, and that allocation, जब वो allocation होगा, this is a very sharp point for suggestion, तब उस समय उसको देखना जरूरी है कि ये केस किसका नेचुरल डोमेन में आ रहा है, whether it's a appeal case or whether it is a large case to be decided by CIT appeal. And at least one thing can be suggested from direct tax committee side, as you rightly pointed out, very good point. That if some assessee who is desirous of getting his appeal disposed of and who otherwise falls in joint commissioner appeal, he can himself move an application to the competent authority who has to transfer, so that he can get the justice in the time. Yeah. I hope that can be done. Yes, we will. So can I now switch over to the second amendment, sir? Yes. The amendment is section 2 clause 42 capital A. There they have said, sir, they have envisaged a new concept of electronic gold receipt, that if you have gold, you get electronic gold receipt in conversion of that, and you again get the gold out of electronic gold receipt, then entire this yatra will be tax neutral. So what they have done is, they have amended section 2 clause 42 capital A, they have amended section 47, and they have amended section 49. My viewers can note all these three changes conjointly. Section 2 clause 42A, section 47 and section 49. That if you get in lieu of gold some electronic gold receipt, and you get gold in lieu of electronic gold receipt, then all this process of conversion will be revenue neutral. So they have said that it will not be regarded as transfer under section 47. So they have said that your original cost will be adopted cost under section 49. So they have said that period of holding will cover the entire thing. Are you getting my point, sir? So yes. The electronic gold receipt, I believe, will be a new concept to look forward for. I believe this is mainly targeting those institutions, religious institutions which have amassed gold. So maybe the idea of the government can be Chitle Saab, that they want this gold lying here and there to be converted to EGR and to incentivize that somewhere. So section 2 clause 242 I have covered, and with this I have also covered section 47 and section 49. Now I come to very important and very
a hotly debated amendment under section 10 clause 10D of life insurance policy wala point, sir. Now, many people, Chitle Saab, in various seminars have asked me at least that Mr. Goel, what is this idea of capping these benefits? मैंने कहा भैया आप गलत आदमी से प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको सही आदमी से प्रश्न पूछना चाहिए. दूसरा बात मेरा हम्बल कहना ही है चिटले साहब, और आप सही आदमी चिटले साहब हो. मेरा सेकंड पॉइंट ये है सर कि दैट सी इट इज प्रीरेगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट समवेयर दे से दैट कि हमें किसको एग्जेम्पशन देना है या किसको एग्जेम्पशन नहीं देना है. बट एक बात पक्का है सर कि ये इससे मैसेज निकल रहा है कि उन्होंने बोला है कि बजट स्पीच में एक जगह लिखा था सर, बेटर कैपिंग ऑफ टैक्स कंसेशंस. नाउ बेटर कैपिंग ऑफ टैक्स कंसेशन में दो बातें लिखी उन्होंने, एक सेक्शन 1010D और एक सेक्शन 54 एंड 54F. 1010D में उन्होंने ये लिखा कि द इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड आफ्टर 1/4/2023 having premium amount of yearly premium amount of more than 5 lakh rupees will not enjoy the exemption under 1010D and will become taxable. जो उनको सरप्लस मिलेगा. सी चिटले साहब, कैन इट बी पॉसिबल कि जो मैं पैसा अपना निकाल के मुझे खुद वो पैसा रिपेट्रिएट हो रहा है वो थोड़ी ना टैक्स होगा, वो तो जो सरप्लस होगा वही टैक्स होगा अल्टीमेटली सेक्शन 56 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो सो the amendment is like this that and old policies will not come, only the policies which will be issued after 1/4/2023, that is 1st April 2023. So the amendment under section 10 clause 10D is like this. What they have done for unit linked insurance policy, they have also done for life insurance policies. So they are of the view that insurance policy should not become investment policy. That is the mantra. So we have to advise our clients that if you are very much keen to take all these kind of exemptions and you are a high net worth individual, then you have to we have to properly orient our clients accordingly. So section 10 clause 10D change is like this. I am summarizing that life insurance policy issued after 1st April 2023 having yearly premium amount of more than 5 lakh rupees will be now not enjoying exemption under 1010D and will become subject matter of taxation under section 56 subsection 2. So there are two important clarification here. Only it applies to the policies issued after 1st April 2023. That has to be earmarked, highlighted. And second point which has to be highlighted is, sir, that it is only surplus income part which will be taxable. So this covers section 10 clause 10D read with section 56 subsection 2. Now, come section 10 clause 46 capital A. This is an important amendment because there may be various viewers which may be viewing this seminar who may have various clients in the various states having development authorities as their client. One will recall, or my viewers might recall, that just few months before Supreme Court of India, Honorable Supreme Court of India, in one of the landmark case of Ahmedabad Urban Development Authority, 449 ITR volume page 1 by Justice S. Ravinder Bhatt. I am repeating, Ahmedabad Urban Development Authority, 449 ITR, page 1 by Justice S. Ravinder Bhatt, has said that all charitable institutions, including development authorities, if they have to enjoy exemption under section 2 clause 15 as charitable purpose and as general public utility, they cannot charge markup beyond a particular, they cannot charge more than reasonable markup. So otherwise, if they will be charging, they will become disentitled from 12AA, etc. 215 proviso will hit them. Section 2 clause 15. So now the legislature has proposed a new section under section 10 as clause 46 capital A, stipulating that institutions engaged in development of housing project and all these institutions, which are statutory organizations, so they can now claim exemption or they can now apply for special exemption under 1046A, which CBDT will notify, and accordingly they can become entitled for exemption under 1046A. So these development authorities are given a special status now under 10 clause 46A, subject to CBDT notification in this regard. When somebody reads the budget, many people might be reading it by very various ways, may have read it number of times. One has always a doubt and confusion is in his mind. What is the reason that charitable trust has so many amendments and so many complex amendments which are very difficult to comprehend and which are very difficult to understand. So I come from section 10 clause 46A now to 1023C and section 11, 12, 13.
if my viewers will appreciate, one would recall that from last 2-3 budgets, the charitable trust provisions have been subject matter of a lot of amendments in the recent past. One of the reasons could be that charitable trusts have been found abusing the provision of Section 1112, and so to plug loopholes and to prevent abuse and misuse of charitable exemption provision, legislature has interdicted and interfered, and maybe to that extent it can be justified. But to expect charitable trust to become so much compliance oriented that it becomes impossible to be complied is a moot point. So the change, though there are so many changes in Section 1023 capital C and Section 1112, but I say with all humility and all humbleness that again this is an area of the amendments which, as far as I am concerned, I could not decode it. Because when I read Section 1023 capital C, I become so messed up, so confused, so badly confused that I don't know what is this section about. Because this section is so densely populated with provisos, explanations, and provisos, and explanation to proviso and proviso to explanation. This is a most vichitra kind of provision, 1023 capital C. And so one has to be very careful when it goes to Section 10 clause 23 capital C, that best of the best minds can get puzzled up reading this curriculum sections, what you say na, that a section which has so much of provisos and explanation. And when you read the current finance bill 2023, when it says कि इस proviso का, इस explanation का, इसका यहाँ पर ऐसा amendment है, तो उसको समझना है, this is a challenge for anyone having limited and little knowledge like me. So 1023 capital C and Section 1112, they have tried to make them paramateria, analogous, homogeneous, and at par. And they have tried to iron out the creases which the legislature has found. 3 important changes as far as charitable trusts are concerned, sir, are to be noted down. One change is that they say that we have found that people are engaged in making charitable chain donations. That one charitable trust donating to other charitable trust, other donating to other. So and everybody in the process claiming that 15% and 15% standard deduction. So they have, what they have said now is that one charitable trust making donation to another charitable trust, they will only treat 85% as the application of it. So this 15% balance portion will become a artificial amount, which will have to be charitable trust will have to find out the ways to how to apply it. Because when you say that only 85% amount will be treated as eligible amount for application and 15% will not be done. So it's a challenge for the charitable trust who has genuinely given 100 rupees to from where it will bring 15 rupees more. So somebody has to further explore that how this amendment goes as far as this notional difference of 15% is concerned. So the amendment is like this, that chain donation they are targeting. They are saying that if it's charitable inter-trust donation from one trust to other trust will be only counted as application of income to the extent of 85%. Now, the second change in the charitable trust is like this, sir, on the specified violation. They say that when we say that the charitable trust registration can be revoked and rescinded and cancelled, there is a concept of specified violation which was inserted in the last budget. Now, in the specified violation, they have added one particular very, very, very draconian change. And if Chitle Saab will be with me and Chawla ji, they will be noting down. This change has to be seriously requested to be taken back or moderated. Because what they are now proposing is that supposingly if you file any application for renewal, etc., and it contains any kind of incorrect statement. Now the word they are using is to be precisely noted down. For calling for cancelling and for initiating cancellation proceedings, which itself are very draconian, they are saying that in Section 12AB, they are saying that, sir, if you are making any kind of statement which is incorrect statement, not only false statement, then your registration can be cancelled. Now, incorrect information. Now it says it is the application referred to in clause AC of subsection 1 of 12A is not complete or it contains false or incorrect information. Now, what incorrect information is a very, very wide word. It can comprehend and embrace everything into it. So to punish the charitable trust, sir,
to say that just because I have innocuously and innocently and bona fidely and as a human error, I have made a punching error and submitted some incorrect information which otherwise do not, impact my entire form filing. So to say that just because of some incorrect information being filed from the charitable trust side in this filing form, then an application form, renewal form, then the registration will be cancelled is a draconian change. It needs to be seriously looked into, and only material errors, some fundamental error, some serious error, some proportionality principle has to be brought into it, which is today to my mind not there in this change. It can have a very serious effect. Various authors, various learned people I have seen some articles coming in Economic Times, they have commented that this change can make the charitable trust life very difficult, because to say that, to expect charitable trust that they will not make any error, innocent errors also, and then to say that the registration proceeding, cancellation proceedings can be launched against the charitable trust is some change which needs to be seriously looked upon. Third change in the charitable trust is section 115 TD. One was chain donation, I could understand. Second is this incorrect information wala change. And third is this 115 TD exit tax change. They say that if a particular charitable trust who has to reapply and get its charitable trust renewed is not filing the proper application on time, even if there is a smallest and slightest of delay, then what will be the implication of the same? They have amended section 115 TD and they have now proposed that it will be deemed to have been converted from charitable to non-charitable, and implication of deemed exit tax will come into play under 115 TD. And the exit tax is again one of the most draconian concepts yet to be tested in a court of law, which says that the tax will come on fair market value of the assets lying in the possession of the charitable trust, sir. So what is happening is that if charitable trust makes a delay of a 1 day, then it will be deemed to be converted from charitable to non-charitable, and 115 TD, sir, will come into picture. And it will be like I always pray to Shani Bhagwan and say कि 7.5 ना लगे सर. ये अगर चेंज अगर ऐसा हो गया और 115 TD 115 TD लग गया आप पे, तो आप बोलिए कि शनि भगवान का अभी तो 7.5 लग गया आपके ऊपर. So what is happening is कि this 115 TD change is again a very, very serious change, which, and liability comes on whom? Trustee also. उसको पैसा देने के लिए trustee को भी पकड़ लेगा department. So this exit tax, Kashinath ji, is a very serious change. All these three changes, that charitable trust का जो change, तीनों change जो मुझे समझ में आया, change ज्यादा है सर, मैं तो 3 ही समझ पाया हूं, बाकी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा अभी तक. अब और सोचिए ये 115 TD वाला चेंज जो है सर, ये रेट्रोस्पेक्टिव का हो गया, ये असेसमेंट ईयर 23-24 से लागू है, दिस एग्जिट टैक्स वाला चेंज, जिसमें आपको पता है ना, जैसे if an application is filed late of renewal etc., then they are saying this 115 TD change will apply from not AY 24-25, it will apply from AY 23-24, sir. So this is a sort of a retrospective change. I hope you are noting it down. So all these three changes of charitable trust, which I could fathom and explicate, to my humble submission, are draconian, especially these two changes regarding this incorrect information pay cancellation proceeding, and secondly this exit tax on deemed conversion from charitable to non-charitable just because of delayed filing, etc. sir. So I believe our CA Institute and Direct Tax Committee should at least humbly point out these two areas of concern, because they can impact genuine charitable organization also. They can also impact those organizations which are genuinely contributing to the cause of welfare of the societies. At the end of the day, sir, nobody of us, Kashinath ji, would advocate that charitable trust should be misused and non-genuine people should be promoted. We are just submitting that there should not be harassment to the genuine charitable organizations, and this provision should not become a tool that charity is disincentivized. So that should not happen at the end of the day. I hope my point is clear, sir. So the idea is this, that charitable trust को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी आप उनसे compliance ही कराए जा रहे हैं, उनको डराए ही जा रहे हैं, और वो चैरिटी करने की बजाय वो इनकम टैक्स से इतना डर जाए सर कि वो चैरिटी करने में भी उनको डर लगने लगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. This kind of fear factor, fear psychosis should not come unnecessarily. But anyways, I believe the message is again very clear कि that they want कि अगर charitable trust से जरा सा भी कोई गलती हुआ, तो हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं काशीनाथ जी गयो, वो गया चैरिटेबल ट्रस्ट, वो गयो. तो इसीलिए हमें अपने चैरिटेबल ट्रस्ट को, जो भी आप लोगों का क्लाइंट है, उनको एडवाइजरी जारी कर दीजिए. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, एडवाइजरी जारी होती है ना, कि किस देश में एडवाइजरी समझते हैं आप,
एडवाइजरी होना चाहिए। अभी तो मैं गवर्नमेंट से भी बोलूंगा, ये हमारा दोस्त सोलापुर ब्रांच का दो दोस्त देख रहे हैं, उनका चेहरा दिखाई दे रहे हैं अभी सर, उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट का लोग है, हमारे चिटला साहब को भी बोल रहा हूँ कि भैया डिपार्टमेंट को बोलिए, गवर्नमेंट को बोलिए, और मैं बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूँ, कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, एक हम्बल सिटीजन ऑफ कंट्री की तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मान लीजिए कल को कोई भी चैरिटेबल संस्था है, आप तो ये चाहते हैं ना कि सब अच्छे से काम करे, तो एक गवर्नमेंट को एक सोचना चाहिए कि एक व्हाइट पेपर लाए चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर इनकम टैक्स के अंदर, ताकि वो सिंपल टू अंडरस्टैंड हो और इजी टू इंप्लीमेंट हो, और वो नहीं हो रहा है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हो गया काशीनाथ जी कि जब हम सेक्शन 10 क्लॉज 23 कैपिटल सी को पढ़ते, मैं बता रहा था, उसमें आप प्रोवाइजो की संख्या देखिए, वो सेक्शन इतना बड़ा है, आपको हमारा एक जोक बोला जाता है लाइटर साइड पे कि आप उस सेक्शन को पढ़िए, आपको कुछ भी, आपको जो ऊपर समझ में आने लगा ना, आप जब तक नीचे पहुंचेंगे आप गुल हो जाएगा, आपको पता लगेगा आपने कुछ समझा ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता। बताइए, ऐसा होना चाहिए? और वो भी, और ऐसा बोला जाए कि उस प्रोवाइजो के, उस एक्सप्लेनेशन के, उस क्लॉज के अंदर चेंज हो गया, ये कैसे समझ में आएगा? किसी को भी समझ में आ जाएगा? भगवान कृष्ण भी कह देंगे बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा राधे राधे राधे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। तो ये मेरा बहुत बहुत विनम्र सबमिशन है कि ये जो चेंजेस हैं 1023 कैपिटल सी के, जिसमें खासकर ये दो चेंजेस है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वाला चेंज, जो सॉरी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन वाला चेंज, और ये दूसरा 115 टीडी वाला चेंज। नाउ आई स्विच टू द बिजनेस हेड. Before business head, there is a change in section 17 also, rent free accommodation. See, I'm not dealing with the salary cases in my chamber, but the change is like this, ki they want to simplify the valuation of rent free accommodation. So they have proposed the change, sir, in section 17 subsection 2 regarding valuation of rent free accommodation. Powers have been given under the rule making authority, which will be notified. So now I come to draw advert to this amendments made in PGBP, profit and gains of business and profession. This is a chapter, separate chapter under the business head, dealing with computation of business income, profit and gains of business and profession. The charging section of that chapter 4D is section 28. Section 28 has already one clause, clause 4, which says that benefit received by Chitle Saab. I hope you were there. I had made some submission, genuine submission regarding charitable trust. I hope you were there, sir. Have you noted down, sir? No, I was not there. Now I have rejoined. I just checked in at the airport. My point was this, sir, that this section, these two changes, you can please kindly note down. One, this change about this, which they are saying that even if there will be a incorrect information in the form file, then registration cancellation proceeding can be launched. I believe this is seriously harassing, sir. And this is antithetical to the concept of charity and ease of doing business. And secondly, what they are saying is that even if there is some innocuous delay in reapplying for charitable trust, they are saying that the exit tax will be applicable, deemed exit tax, and deemed conversion will be there. So both these changes in 115 TD and this 12 AB, sir, both these changes have to be seriously looked upon, sir, I believe. Okay. So I was talking about now section 28 clause 4, sir. So grateful to you, sir. 28 clause 4. It says that benefit or perquisite arising from the business or profession, whether convertible into money or not. ये लैंग्वेज मेरे हिसाब से चिटले साहब कंप्लीट था। इसका मतलब ये था कि कोई कपिल गोयल जैसा प्रोफेशनल है, उसको प्रोफेशनल काम का बदला में पैसा की बजाय, मनी की बजाय टिकट दे देता है कहीं बाहर जाने का, या कोई काइंड में गोल्ड दे देता है, तो उस काइंड का अमाउंट का टैक्स हो जाएगा। अब व्हाट दे आर सेइंग इज कि दे आर सेइंग इन 28(4) कि दैट इवन कैश अमाउंट विल बी टैक्सेबल। टेल मी सर, विद योर ग्रेट एक्सपीरियंस, कि कभी ऐसा होता था कि किसी प्रोफेशनल को कैश में बेनिफिट मिलता हो, या मॉनेटरी फॉर्म में, सॉरी, और वो उसको ये मानता हो कि ये एग्जेम्प्ट और ये टैक्सेबल नहीं है, 28(1) में नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेगा क्या, और उस पर क्या 194J का टीडीएस नहीं कटेगा? वो मेरे हिसाब से, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो चीज ऑलरेडी 28(1) में टैक्सेबल होगी, या मेरे पीएनएल का पार्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जिसपे ऑलरेडी टीडीएस 194J में कट रहा है, उसके अंदर 28 क्लॉज 4 में अमेंड करने का जरूरत कहां से पड़ गया? इज इट सम काइंड ऑफ एन इनफ्रक्चुअस अमेंडमेंट? What is, sorry, I am not talking about undisclosed receipt on money. That is वो तो उसमें आप जो टैक्स करेंगे undisclosed income का, वो अलग चीज है. My point is this, कि if I am receiving any benefit as Kapil Goyal in monetary form, how I will treat it, and where it will be TDS will be deducted, and how I will treat it, sir. How and what is the need of this 28(4)?
Sir, there are some, and Sir participated discussed that in Mahindra and Mahindra, if you receive loan which is a capital receipt and subsequently it is waived, it will not be brought to tax because it was per se capital receipt. I'm so happy that you touched it, sir. I'm so happy. I would love to clarify it. See, first you understand that amendment is done in 28(4). Now, what is the amendment done, sir? I'm reading it when you have touched it. Kindly note, and you please note it. What it says, the clause now which is there, benefit or perquisite arising from business or profession, whether convertible into money or not, or in cash or kind, or partly in cash and partly in kind. The sir fundamental opening clause is still same. How Mahindra and Mahindra could be overruled when you are still saying that it should be benefit or perquisite arising from business and profession, meaning thereby it is only revenue receipt taxable today. That is, capital receipt are still out of the net. The amendment is not saying that the loan which I took from a financial institution or a lender and which loan was waived and I am not supposed to repay the principal amount, sir. That principal amount is not taxable in 28(4) even today. Why? Because it is still saying benefit or perquisite arising from business or profession, which can be only trading amount. Mahindra and Mahindra, what says 404 ITR 10? It says that this loan amount which will be waived, sir, it is my capital receipt because ये मेरा business नहीं है कि लोगों का पैसा ले लेना और उसको ना देना. Sorry, I hope you are clarified. So Yes. means Mahindra and Mahindra is overruled. A. Secondly, even it is not the amendment which is made, and even intent अगर आप देखेंगे memorandum में उनका intent क्या है? उनका intent ये है सर simple कि 28 clause 4 जब से आया था हमारा intent था कि kind को भी tax करना, benefit को और cash को भी, और उन्होंने उसके साथ में बोला कि इसलिए हमने अमेंड कर दिया और 194R को अलाइन कर रहा है. अभी चितले साहब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो चाहते हैं 194R के साथ 28 को अलाइनमेंट हो जाए, इसलिए भी वो अमेंडमेंट कर रहे थे. अब सोचिए 194R में तो अमेंडमेंट अलग से हुआ है, 194R में एक्सप्लेनेशन 2 ऐड हुआ है सर, और 194R का एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? वो कहता है कि अभी आपको टीडीएस बेनिफिट परक्विजिट पे कैश में भी कटेगा और काइंड में भी कटेगा. बट मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं चितले साहब कि अभी बेनिफिट परक्विजिट कैश में आ रहा है और 194J में टीडीएस कट रहा है. काशीनाथ जी, क्या दो सेक्शनों में टीडीएस कटेगा? आपको कोई प्रोफेशनल फीस बेनिफिट कैश में दे रहा है और उस पर 194J में टीडीएस काटा जाएगा या 194R में काटा जाएगा या दोनों में काटा जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर. Yes, specific will govern. बट सर क्वेश्चन इज दिस कि आप दो पॉइंट है, आप अब ये सब क्यों हुआ है अभी आप समझेंगे. 194R आया पिछला साल 2022 में, उसके अंदर उन्होंने सीबीडीटी के सर्कुलर में जब वो आया था सर्कुलर लास्ट ईयर काशीनाथ जी, उसमें उन्होंने बोल दिया था, जबकि एक्ट में नहीं था, कि बेनिफिट इन काइंड वाले पे भी टीडीएस कटना है और बेनिफिट इन कैश वाले पे भी कटना है. उस सर्कुलर को विंडिकेट करने के लिए ये बैक अमेंडमेंट हो रहा है सर. आप समझ रहे हैं, जैसे एक बैक वाटर है ना, केरला में बैक वाटर है, ये बैक अमेंडमेंट है. बैक अमेंडमेंट समझते हैं आप क्या होता है? अब ये नया ट्रेंड है सर. चितले साहब, आई एम सॉरी टू से लाइक दिस. बैक अमेंडमेंट का मतलब चार्जिंग प्रोविजन के हिसाब से टीडीएस प्रोविजन चेंज नहीं हो रहे हैं, टीडीएस प्रोविजन के हिसाब से चार्जिंग प्रोविजन चेंज हो रहे हैं. कितना जबरदस्त मेरा अपना हम्बल सबमिशन है सर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरे समझ से ऊपर है, ये बाउंसर है मेरे लिए, बाउंसर है सर. टीडीएस को चार्जिंग प्रोविजन फॉलो करेगा या चार्जिंग को टीडीएस फॉलो करेगा? ये कंसेप्ट तो नोवल कंसेप्ट है. एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं बोल रहा हूं कि आप बोल रहे हैं कि नहीं साहब हमारा टीडीएस में तो ज्यादा अमाउंट पे टीडीएस कट रहा है बट कंप्यूटेशन में तो नहीं आ रहा है, इसलिए हम कंप्यूटेशन प्रोविजन को चेंज कर रहे हैं. आप वैसे चेंज कर दो. आप ये क्यों कह रहे हो कि हम टीडीएस की वजह से कर रहे हैं? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर पूरा इनकम टैक्स एक्ट में जितना भी टीडीएस का प्रोविजन है उसके हिसाब से चार्जिंग प्रोविजन चलना चाहिए. ऐसा हो सकता है चितले साहब? ऐसा हुआ है कभी? हमें तो नहीं सिखाया गया सर, कभी स्कूल में, कॉलेज में, या कभी भी ऐसा लॉ कॉलेज में, या कभी हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में ये सिखाया गया कि चार्जिंग प्रोविजन पहले है और टीडीएस तो सबसे बाद में है सर. और वैसे भी देखिए सर, टीडीएस चितले साहब कहां आता है? पहले है चार्जिंग प्रोविजन, फिर कॉम्प्यूटेशन प्रोविजन, फिर असेसमेंट प्रोविजन और फिर टीडीएस प्रोविजन. ये सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी है. क्रोनोलॉजी ये थोड़ी ना कि पहले टीडीएस और बाकी सब बाद में. हमारे यहाँ गणेश जी का स्थान, आप तो गणेश जी को बहुत, आपके यहाँ सर ओम गणेश है नमः, हमारे यहाँ गणेश जी का स्थान चार्जिंग प्रोविजन का लॉ में, टीडीएस का नहीं है सर. अभी क्या होने लग गया है, टीडीएस का स्थान काशीनाथ जी बदल गया है. मतलब
ये अमेंडमेंट 28 क्लॉज 4 का जो चिटले साहब बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवररूल करने के लिए लाया गया महिंद्रा एंड महिंद्रा का, वो दूर दूर तक नहीं है सर, क्योंकि मेरा कंसीडर्ड ओपिनियन है चिटले साहब, अभी भी सिर्फ 28 क्लॉज 4 में आप रेवेन्यू रिसीट को टैक्स कर पाएंगे, कैपिटल रिसीट को टैक्स नहीं कर पाएंगे। जो लोन वेवर्स हैं वो पहले भी टैक्स के बाहर थे नेट से, और आज भी टैक्स नेट से बाहर रहेंगे। आई होप आई एम क्लियर सर। और दूसरा पॉइंट, इस 28 क्लॉज 4 के अमेंडमेंट से तो मुझे लगता नहीं है कुछ ज्यादा फायदा होगा, इसेंशियली इससे कोई इफेक्टिव टैक्स बेस बढ़ेगा। इसका एक ही इंपैक्ट था 194R वाली बात का। 194R में उन्होंने एक अलग से एक्सप्लेनेशन नंबर 2 डाल दिया है, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि 194R में टीडीएस काटते वक्त बेनिफिट इन काइंड एंड बेनिफिट इन कैश बोथ विल बी कंसीडर्ड फॉर पर्पसेस ऑफ टीडीएस। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड काशीनाथ जी। सो 28 क्लॉज 4 ये था सर। आगे बढ़ते हैं 35D। 35D इज ए प्रोविजन विच डील्स विद प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो उसका हमें खर्चा मिलता है सर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का। उसके लिए उन्होंने कंप्लायंस बर्डन डाला है चिटले साहब की, वो कह रहे हैं आप खुद कर लीजिए और हमें करने के बाद एलिजिबल खर्चा हमें रिपोर्ट कर दीजिए कंप्लायंस में, हम देख लेंगे कि आप ठीक कर रहे नहीं कर रहे, आपका केस सिक्योरिटी वगैरह में आ जाएगा। तो वो उन्होंने 35D में कंप्लायंस मैकेनिज्म डाला है कि आपको रिपोर्टिंग मैकेनिज्म करना है, एज आई अंडरस्टैंड इन सिंपल सेंस। सेक्शन 43B सर, कमाल का चेंज है सर, मेरे को समझने में बहुत दिक्कत हुई, फिर मेरे को मेरे दोस्तों ने हेल्प करी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चिटले जी। मैं कहता हूं ना, आप तो मुझे ऐसे ही सर समझते, मेरे को नहीं समझ में आता ज्यादा कुछ, मैं तो बहुत मुश्किल होती है समझने में सर। इट्स ए चैलेंज फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड सम चेंजेस सर, एटलीस्ट। उसमें लैंग्वेज क्या होती है, कई बार इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कहते थे सर, वो लॉर्ड डैनिंग जब थे वो कहते थे इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट ए टूल ऑफ मैथमेटिकल प्रिसीजन एंड इट इज द कोर्ट्स बिजनेस टू सी दैट क्रीजेस आर आयरन्ड आउट, दैट लॉर्ड डैनिंग यूज्ड टू से। So what I am submitting now in fact 43B, they have added one clause H for Hong Kong. 43BH Kashinath ji. Now 43BH what says? It says that if you are claiming any expenditure in your P&L account, in your business income, and that expenditure is qua any small enterprise or any micro enterprise as defined in 43B in that act of Micro and Small Enterprise Act, and that payment, if you are claiming on accrual basis, will not be allowed. That will only be allowed to you on basis of payment basis, meaning thereby कि आपको if 31st मार्च को लेटर से आपके किताबों में कोई माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है, चिटले साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, तो 31 मार्च को क्रेडिट कोई बैलेंस आ रहा है एंड दिस इज पर्टेनिंग टू स्मॉल एंटरप्राइज एंड माइक्रो एंटरप्राइज, तो आपको वो खर्चा क्लेम तभी मिलेगा, और वो आपने डेबिट भी किया हुआ है, क्लेम भी कर रहे हैं, तो आपको तभी मिलेगा कि जब आपने उसको ऑलरेडी पे कर दिया होगा। एम आई राइट सर? सपोजिंगली आपने ईयर के दौरान कुछ खर्चा किया है और वो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो माइक्रो एंड स्मॉल का, वो हिट नहीं हो पाना चाहिए मेरा ओपिनियन में सबमिशन में। वो तो वो बात हुई कि जो पेमेंट आपको जो 43B में आपको, और उन्होंने ये बोल दिया कि आपको कोई भी खर्चा जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज का है वो उस लॉ की डेट के हिसाब से तो पेमेंट होना ही चाहिए, साथ में वो पेमेंट भी हो जाना चाहिए। मतलब इन ए सेंस इफ आई सिंप्लीफाई कि अगर आज आपको स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज का कोई खर्चा क्लेम करना है तो 43B के हिसाब से वो पेमेंट बेसिस पे ही आपको मिलेगा, एक्रूअल बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा। चिटले साहब, यू वांट टू ऐड एनीथिंग ऑन दिस? सॉरी, आप ऐड करना चाहते हैं कुछ इसमें सर? नहीं, क्या है जो 31st मार्च को प्रोविजन क्या है, हाँ जी, एंड एज पर MSME एक्ट या एज पर एग्रीमेंट वो अगर नेक्स्ट 45 डेज या 15 डेज में दे सकते हैं तो वो अप्रैल में पेमेंट किया हुआ अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं अलाउ होगा। जैसे दोबारा बोलिए सर। सर वो कहते हैं कि आपको MSME का 31 मार्च तक पेमेंट किया तो ही अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा। There is only one exception, that if you have agreed that okay it should be paid within 45 days and you have bill date is 31st March, then even if you pay in April within or May within 45 days, that still continues to be allowed. But supposingly sir, if I am dealing with micro and small enterprise, I ask you another type of question to simplify it, कि वो मैंने उसको उसका ड्यू डेट के बाद पैसा दिया 15 दिन या 45 दिन जो भी है, उसको जो 31 मार्च से पहले विद इन फाइनेंशियल ईयर पे कर दिया, उसको डिसअलाउ तो ना कर पाएगा कोई? नहीं, वो डिसअलाउ नहीं होगा। आप 31 मार्च का बिल है, 31 मार्च को प्रोविजन कर रहे हैं और 31 मार्च के बाद आपने पे किया, समझो 15 अप्रैल पे को पे किया, तो वो भी अलाउ हो जाएगा, because it says within due date allowed under the act or that is MSME act or agreement. नहीं, उसके अंदर लैंग्वेज वो लिख रहा है सर, एनी सम पेएबल बाय द असेसी टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज beyond the time limit specified in section 15. तो you mean to say
And you mean to say that it has to be within first, अगर वो 31 मार्च वाला है तो उसको पहले तो उसके हिसाब से पेमेंट करना ही है जो उसको 45 दिन है जी, तो अलाउ हो जाएगा, तो उसको अलाउ हो जाएगा। वरना उसको अगर वो बाद में कर रहा है तो सर उसके बाद वो वर्ष में अलाउ हो जाएगा, वो उस अगले वर्ष में होगा, वो टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जी। मगर आप अगर 1 जनवरी का पेमेंट 1 अप्रैल को कर रहे हैं तो वो अलाउ नहीं होगा क्योंकि वो 45 डेज के बाहर है। तो 1 जनवरी पर वो ऐसा परमानेंट डिसअलाउंस तो नहीं होगा, उसको अगला साल तो मिलेगा। परमानेंट डिसअलाउंस नहीं है, हाँ, इट इज नॉट परमानेंट डिसअलाउंस। तो I hope this conversation of between you and me helps various participants to understand and decode it. इसीलिए मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था सर आपसे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बेटर कर रहा था। So इससे मेरा टेक अवे क्या है चितले साहब कि इस पे भी हमें सजेशन देना चाहिए हम्बली कि that all these provisions ultimately at the end of the day sir are creating artificial difference between my real business income and my hypothetical business income. Now somewhere if you make such kind of disallowance, the question will again come sir ultimately तो मेरा tax liability एक particular year में तो आ ही जाएगा ना, या पोस्टपोन हो जाएगा, इतना ही है। और दूसरा बात एक और सर निकल के आ रहा है कि जैसे जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं जिनको ये बात सबसे पहले 3CD के अंदर देखना होगा तो उनके लिए भी तो एक चैलेंज नहीं होगा क्या सर प्रैक्टिकल की इसको फेरेट करना कि कौन सा पेमेंट माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का है और कौन सा नहीं है, वो प्रॉब्लम होगा। चलिए ठीक है सर। तो 28 क्लॉज 4 हो गया, 35D हो गया और 43B माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज हो गया। 43B में एक और इश्यू आता है, 43B प्लीज सर। जैसा समझो ऑडिट फीस है तो ऑडिट फीस का वो प्रोविजन करते हैं इसमें, मगर वो पेएबल नहीं होता है। तो आईडीबीआई का जो जजमेंट था व्हेन द पेयर इज नॉट आइडेंटिफाइड वगैरह, तो उसका यहाँ बेनिफिट कुछ होगा? सर सी अल्टीमेटली यू आर मेकिंग जस्ट प्रोविजन नॉट अ लायबिलिटी बिकॉज़ बिल विल कम इन सब्सिक्वेंट ईयर। मैं आपकी बात समझ गया। यू हैव अगेन ए वेरी लर्नेड पॉइंट। यू मीन टू से कि मिस्टर गोयल फॉर मैचिंग प्रिंसिपल और टू मैचिंग प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से आपने एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया टू make a true and fair view of accounts, and you claim that expenditure also in your P&L account. Now question comes, there are two different angles. एक section 37 का angle है कि whether this provision will be whether this provision based expenditure can be called as a contingent expenditure or not. That is already decided by Supreme Court in 37 ITR page 1 Calcutta discount leading judgment, that if there is a liability to pay and even if you are estimating, then the expenditure will be allowed. I hope I am clear. That's the settled law. Yes. Now comes that Mr. Goel, if you are making any provision but right to receive payment or what you say that legal right to claim payment is not there with the payee, can we say that 43B embargo will be attracted? That's your precise point. Yes. I'm sorry sir, ultimately at the end of the day supposingly if that agreement is ultimately if you are making an provision of a liability or an expenditure on basis of an agreement only na, then at least you know who is the person who has to receive this amount. No, so IDBI will not apply. Only thing is that I am not making bill on 31st March. I will make bill in September, August, whenever audit is complete. But to my understanding, it will be difficult to say from 43B, sir. Okay. Because ultimately what you say provision is created or what you say provision is made in the accounts on basis of some covenant and agreement only, na commercial agreement. No, that is made, but for 43B says that as per that law, it has to be paid. Now that law says that 15 days from bill date or 45 days if agreed. So I have not issued the bill. Audit तो year end के बाद होगा और मैं bill या जून में या जुलाई में या अगस्त में. You are interpreting in light of section 15 of micro, small and medium enterprise development. Yes. I have not issued bill. It is only provision for audit is made by the client. So you mean to say that Mr. Goel, since section 15 of that law is not attracted, so 43B will not be attracted? That's what one wants to see. I will have a great laugh on that. See, it is something for our good constitutional courts and high courts and Supreme Court and what to say legal courts to. It's a very good point which you have pointed out that interplay of section 15 of that small act with the 43B will be a very, very interesting interplay in the times to come to decide. Again, I learned something very good, sir. This is a new thing to me, sir. Now we come to, sir, 44AB, 44AD and ADA. Very close to chartered accountants, 44AB. Tax audit. And a emotional provision for chartered accountant.
So जैसे as Kashinath ji is smiling, so every chartered accountant has some smile to Chitle Saab is smiling 44 AB. So I believe they say that अभी तो 44 AB कम ही होना है. मुझे ऐसा लगता है चिtle साहब की 44 AB का किसी से हमें मंत्र, सॉरी मैं ऐसे लाइटर साइड पे बोल रहा हूँ, हमें कुछ मंत्र कराना चाहिए कि 44 B का आयु लंबा हो सके और 44 B में उसका जो एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे, शिवर ना करे. जैसे होता है ना कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल खिसक रहा है इस तरफ, 44 AB इधर हो रहा है, उसकी जगह कम हो रही है सर चिtle जी, तो वो कम हो रही है. एनीहाउ ये एक लाइटर साइड पे इमोशनल फीडबैक था. 44 AB का चेंज इस प्रकार से है कि वो उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया है सिर्फ कि 44 AD वाला लोग को, 44 ADA वाला एलिजिबल लोग को जो वहां फाल करता है उसको 44 AB का अंदर नहीं डाला जाएगा. अब 44 AD का और 44 ADA का चेंज सिंपल सेंस में समझे तो सर इतना सा ही है कि उन्होंने 44 AD का लिए 2 करोड़ का अमाउंट को 3 करोड़ किया है और 44 ADA का 50 लाख से 75 लाख किया है. और उसमें उन्होंने साथ में ये भी लगा दिया है राइडर कि आपका जो पूरा व्यापार है उसका हिस्सा, रिसीट साइड का हिस्सा, नॉट पेमेंट साइड, आपका रिसीट काशीनाथ जी 95% तक का 5% से ज्यादा का रिसीट आपका कैश में नहीं होना चाहिए. नाउ चिtle जी 5% से ज्यादा का कैश में नहीं होना चाहिए, इसका जो इसने उनको वर्डिंग किया है वो थोड़ा सा फिर प्रोवाइजो डाला है उस पर. अब प्रोवाइजो की तरह ही पढ़ा जाएगा और उसको इंटेंशन में पढ़ा जाएगा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन से. तो उसका सेंस ये बनना चाहिए सर कि जो पेटीएम वाला पेमेंट है, ये जो एफपीआई वाला पेमेंट है और ये जो डिजिटल पेमेंट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में, दैट शुड बी काउंटेड एज चेक पेमेंट एंड दैट शुड नॉट बी काउंटेड एज ए कैश पेमेंट. सो Kashinath ji, the point is this that if your total amount of receipts your amount of cash receipt is not exceeding 5%, cash receipt means receipt excluding that digital payment receipt. So your eligibility for 44 AD will be 3 crore and your eligibility for 44 ADA will be 7 crore. Am I clear, sir? Chitle sir, am I right? Am I right? Yeah. And we have to get this clarified, sir, Chitle sir, that from the CBDT, when they say that it has to be an account pay check and so as to not to be treated as a cash thing, then what they mean to say? They have to be properly clarified in the language of the law. Somewhere there is some confusion in the language of the law. Yeah, in 48.3 they have clarified. Yes, you are right. That sort of clarification should be coming in 44 AD and ADA. You are right, sir. Now, there is another change in the business head, sir, 44 BB and BBB. What they are saying is that people who are foreign enterprise and falling in presumptive income of 44 BB and BBB, they say you can't ride on 2 horses. When I say you can't ride on 2 horses, it means that ultimately, if you are in presumptive income, Kashinath ji, then you can't claim losses. So 44 BB के साथ आपका मैरिज हो गया है और 44 BBB के साथ आपका मैरिज हो गया है, तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं कर सकते. That they have said in 44 BB and BBB only. Now I switch over, Chitle sahab, to capital gains. Section 45, subsection 5, capital A, joint development agreement. Now this provision was inserted, I believe, when Mr. Jaitley sahab was finance minister. There, this section was saying that if you are entering into a joint development registered agreement, then your thing which you will, then you the built up area which you will get, it will be taxed, the value of stamp value of that. And second, what you say is the cash amount will also be taxed. Now they have plugged one loophole, sir, here. They say that the language written in 45.5 Kashinath ji was the amount of consideration received in cash. अभी उन्होंने क्या language कर दिया उसको? That amount of consideration received in cash or any other mode. Are you getting my point? And this is also backed from TDS provision only 194 IA. So to match 194 IA with 45.5A to align them, they have made this amendment in section 45 subsection 5A. And now the language, you can note down any consideration received in cash or by check or by draft or by any other mode will be there. It is prospective change applicable from assessment year 24-25. The meaning of this change is this, कि पहला किसी ने उन्होंने बोला कि they are very sharp now. They say that many people have interpreted 45.5A कि साहब हमारे को तो सिर्फ जो built up area मिल रहा है और कैश मिल रहा है वही taxable होगा 45.5A में. Let us say किसी बिल्डर ने काशीनाथ जी गोल्ड का कॉइन दे दिया काइंड में या और कुछ दे दिया ड्राफ्ट में या किसी और चीज में, वो नहीं आएगा. तो उन्होंने उसको कहा कि एनीथिंग इन कैश, एनीथिंग इन check, anything in draft or any other mode also they have written. So these 4 things they have added: check, draft or any other mode. Earlier it was only cash plus built up area. So now from AY 24-25,
prospective effect, you will be taxed on cash plus check plus draft plus any other mode under section 45(5)(a) to align it with 194(i)(a). Another change is also a change to plug loophole. In section 48, they say that many people were claiming double and triple benefits, double benefits. There's something in some interest which they have claimed already under house property in section 24, something which they have already claimed in chapter 6A. They are also claiming while computing capital gains. You know what happens? Supposedly I am Kapil Goyal. I purchase one house from interested house loan and I make payment of interest. So they are saying that this interest was also claimed under 24 and this interest was claimed under chapter 6A somewhere, and then it was again claimed when I sold it and as a cost of acquisition, as a cost of improvement. So they have made one amendment in section 48 clearly specifying that some benefit which you have already claimed under section 24 house property head or chapter 6A will not be again given under section 48. So that double benefit cannot be enjoyed. So this change is also a section 48 wala change bhi, sir. They say provided that cost of acquisition of the asset or cost of improvement will not include the deduction already claimed. See, I am telling you one very important thing here. Deduction claim means कि जिसका benefit आपने ले लिया है, जिसका benefit आपने नहीं लिया है वो आप ले सकते हैं. आप समझ रहे हैं? तो section 48 change only bars double benefit, double dipping. So this change is a prospective change applicable from assessment year 24-25. So 45(5)(a) हो गया, 48 हो गया, 47 और 49 का चेंज मैंने बता दिया. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट इज ए न्यू कंसेप्ट. उसको उन्होंने सेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट ट्रांसफर में भी डाला है और 49 के अंदर जो उसका डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो भी बताया है. अभी आगे बढ़ते हैं सर 50AA. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काशीनाथ जी. बहुत सारा लोगों को मार्केट लिंक डिबेंचर का पता है, अभी अपने को ज्यादा नहीं पता है, बट कंसेप्ट उन्होंने मार्केट लिंक डिबेंचर का डाला है. मार्केट लिंक डिबेंचर भी एक डिबेंचर नाम का अलग डिबेंचर होता है जिसका जो वॉलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होता रहता है उसका सब. तो अभी वो लिस्टेड सिक्योरिटी की तरह होता है. उसका ट्रीटमेंट आज की तारीख में तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर देते हैं विदाउट इंडेक्सेशन 10% का टैक्स के साथ. अभी उन्होंने एक नया सेक्शन डाल दिया काशीनाथ जी, सेक्शन 50AA. उसमें उन्होंने क्या बोला है सर 50AA में they have specified special special taxation provision for this market link debenture, in which they have said कि जब आप market link debenture बेचेंगे and it is applicable from AY 24-25 सर. बहुत लोगों को confusion होता है कि ये क्या retrospective change तो नहीं है. It is not retrospective change sir, it is prospective change, very clear. So Kashinath ji, this 50AA is a new provision inserted in capital gain head dealing with special provision of computation of capital gain in respect of market link debenture. It will be deemed short term capital gain. आप समझ रहे हैं? इसको जब भी आप बेचेंगे तो जो भी ट्रीटमेंट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह होगा और उसका कैपिटल गेन जो निकाला जाएगा मार्केट लिंक डिबेंचर का वो 50AA के सेक्शन में निकाला जाएगा. अभी मैं आपको एग्जांपल पूछता हूं. लेट अस से मार्केट लिंक डिबेंचर आपने बेचा और उसको आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया 50AA में. बट ये ऐसा भी तो हो सकता है सर वो अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो और उसका क्या मुझे कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिल सकता है 54EC का और 54F का? क्योंकि 54 जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 50AA क्या कह रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को डीम कर रहा है. वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट डीम नहीं कर रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डीम कर रहा है. और 54F या 54EC और 54F आपको किस पे एग्जेम्पशन दे रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे. तो क्या मैं 50AA वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो डीम कैपिटल गेन है उसको 54 में एफ में या 54EC में ले सकता हूं? That's a precise question. So my understanding is this, humble understanding based on some Supreme Court ruling, कि section 50AA is not deeming the nature of the asset as short-term capital asset. It is only deeming the short-term capital gain. So if otherwise there is a benefit available in context of some long-term capital asset, that can be still obtained against 50AA. So one can keep it in mind that section 50AA is deeming my capital gain to be a short-term capital gain arising from transfer of short-term capital gain shall be deemed to be capital gain arising from this transfer of a short-term capital asset. So one has to correlate section 50AA with section 54F also and 54EC also. So the idea behind section 50AA is in simple sense is this, that they have brought out a special provision for market link debenture. Earlier there was no such provision in the statute for market link debenture. First time this provision has been brought into the statute. Before this change in section 50AA, the treatment of capital gains on market link debenture was general treatment which we are doing for any long-term capital assets, sir.
So 50AA, simply I'm repeating for the clarity because this question has been asked in many seminars. Notwithstanding anything contained clause 242A or section 48, where the capital asset is a market linked debenture, the full value of consideration as a result of transfer of this shall reduced by this shall be deemed to be capital gain arising from transfer of short-term capital asset. So this is a deemed short-term capital gain which is made under 50AA. Now comes 54 and 54F, sir. 54 and 54F, काशीनाथ जी, they have said that कि आपको 10 करोड़ रुपए से ऊपर का नया घर का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. तो देखिए नया में तो 10 करोड़ में घर मिल जाता है. नहीं, बात ये कि 10 करोड़ में घर मिलता है नहीं मिलता ये बात नहीं है सर. बात ये है कि धीरे धीरे ये अभी तो 10 करोड़ हुआ है. मैं किसी से डिस्कशन चल रहा था. देखिए चेंज इज गुड, कई बार होता है जैसे चेंज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप 10 करोड़ कर रहे हैं, अगले साल 5 करोड़ कर रहे हैं, फिर उसको 2 करोड़ पे ले आ रहे हैं. तो दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि किसको आप बोल रहे हैं कि 10 करोड़ वाला ज्यादा अमाउंट का घर है और किसी के लिए 10 करोड़ कम अमाउंट का घर है. एनी हाउ दे हैव सेड इन सेक्शन 54 दैट आपको 10 करोड़ रुपए तक का ही कैपिटल गेन का मिलेगा और 54F में भी 10 करोड़ तक का ही मिलेगा. 10 करोड़ से ऊपर का अगर आप घर खरीद रहे हैं नया घर, तो आपको ना तो 54 में छूट मिलेगा और मतलब 10 करोड़ तक का ही मिलेगा. अगर आपने 20 करोड़ का घर खरीदा है तो 10 करोड़ तक का आपको एंटाइटलमेंट मिलेगा, उससे ऊपर का एंटाइटलमेंट नहीं होगा सर. तो काशीनाथ जी इसका आइडिया ये है कि उनका कहना ये था कि जब हम ये प्रोविजन लाए थे 54F गवर्नमेंट का मेमोरेंडम में, तो हम छोटे को घर को खरीदने का बात कर रहे थे, अफोर्डेबल हाउसिंग का. तो कह रहे 10 करोड़ से ऊपर का घर अफोर्डेबल में नहीं आता. अब ये 10 करोड़ जो वैल्यू है ये बड़ा सब्जेक्टिव वैल्यू है. व्हाई नॉट 5 करोड़, व्हाई नॉट 2 करोड़, व्हाई नॉट 1 करोड़, व्हाई नॉट 50 लाख. सो दिस इज ए न्यू ट्रेंड. यू आर सी, अब इसलिए मैंने बोला था कि ये दोनों चेंज, जो वो 5 लाख का LIC वाला चेंज और ये 10 करोड़ वाला चेंज, दोनों का उन्होंने हेडिंग दिया बेटर टारगेटिंग ऑफ टैक्स कंसेशन. So I just sum up my capital gain head changes. Section 45 subsection 5A was joint development agreement. Section 48 was regarding कि आपको डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा. Section 50AA is a special provision for market linked debenture deemed short term capital gains. Section 54 and 54F is 10 crore rupees. This is the journey of capital gains. Now, and 55 also, one change more. 55 they say that the any intangible asset, self-generated asset, any right for which you have not paid any cost. आपके यहाँ बॉम्बे में शायद कुछ कंसेप्ट होता है काशीनाथ जी, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट का, TDR. ये चेंज उसको मेरे ख्याल से थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है. इनका कहना यह है कि किसी भी चीज के लिए जो आपने खर्चा नहीं किया है उसका डीम्ड कॉस्ट माना जाएगा निल, जीरो, शून्य. सर TDR क्या रहता है एग्जैक्टली? अगर म्युनिसिपैलिटी ने कंपल्सरी एक्वायर्ड बोल सकते हैं आप, क्योंकि प्ले ग्राउंड का रिजर्वेशन डाला, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो TDR फॉर्म में देते हो. तो अगर वो TDR यानी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहता है कि ट्रांसफरेबल रहता है. वो ट्रांसफरेबल तो रहता है दादा, पर उसके लिए उसका कॉस्ट क्या है? नहीं, वो क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है इसलिए वो TDR फॉर्म में देते. तो पर पहले क्या हो रहा था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ जजमेंट दे दिया था कि TDR का है ना, उसका भी रेडी रेकनर के हिसाब से रहता है TDR का वैल्यू. जब हम नहीं पता है उसमें काशीनाथ जी क्या हो रहा था. बॉम्बे हाईकोर्ट का कुछ जजमेंट आ गया था कि जिसमें उसमें एक बॉम्बे में रहता है, एक पकड़ी करके एक कंसेप्ट रहता है, टेनेंसी रहता है, उसके लिए वो रहेगा वो. पर अब तो उन्होंने सेक्शन 55 में बिल्कुल क्लियरली लिख दिया कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट, पहले भी लिखा था गुडविल वगैरह आपको पता है, अब उन्होंने लिख दिया कि एनी इंटेंजिबल एसेट भी लिख दिया और राइट भी लिख दिया, जिसका आपने कोई खर्चा नहीं किया उसका डीम्ड कॉस्ट नील हो जाएगा. वो मुंबई में रहता है, पगड़ी करके कंसेप्ट रहता है, ओनर नहीं रहता, ओनर दूसरा रहता है, लेकिन उनके पास पोजीशन रहता है. सो माइट बी इट कैन इंपैक्ट दोस काइंड ऑफ केसेस सर. सो कैपिटल गेन मैंने फेयरली कवर कर दिया सर. नाउ वी कम टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 27B. इफ यू आर रिसीविंग नाउ शेयर प्रीमियम, इट्स ए प्रोस्पेक्टिव चेंज कि अब आप भविष्य में कोई शेयर प्रीमियम रिसीव करेंगे नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर से, वो भी सेक्शन 56 to 7B में आपको वैल्यूएशन के तरीके से लेना पड़ेगा. लेट अस टेक ए प्रैक्टिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट. कि आपने कोई शेयर प्रीमियम रेज किया रेजिडेंट इन्वेस्टर से, तो आप वैल्यूएशन करा रहे हैं DCF मेथड से, NAV मेथड से. अब एक आप नॉन रेजिडेंट से रिसीव कर रहे हैं और आपको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा फिर. अब देखिए इट्स ए वेरी टिपिकल चेंज. जब से फाइनेंस एक्ट 2012 से सेक्शन आया था 56 to 7B, ओनली रेजिडेंट शेयर होल्डर वाला शेयर प्रीमियम का बात था, नॉन रेजिडेंट वाला नहीं था. फर्स्ट टाइम इन 2023 बिल दे हैव नाउ सेड कि इट इज नॉन रेजिडेंट शेयर प्रीमियम आल्सो विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसिडरेशन. तो सो इट इज समवेयर ब्रिंगिंग नॉन रेजिडेंट इनटू द ट्रैप समवेयर कि अभी आपको नॉन रेजिडेंट जो आपका शेयर होल्डर होगा उसका इंफॉर्मेशन, जानकारी भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग वेयर इट इज गोइंग? So 56 to 7B change is also a very tactical change
in a sense that now if you are receiving share premium from non-resident shareholder also, that will be subject matter of regulation under Rule 11 UA. And if not, then you have to pay tax. Now comes, sir, I have discussed capital gain, other sources, this business income, exemption, definition clause. Now I come to assessment changes, sir. In assessment changes, first change is in section 132, and it's a very typical change, Kashinath ji. In section 132, what they have said that if you are going to make a search, then anybody assistance को आपको चाहिए तो आप ले सकता है. Carpenter भी लिखा है उन्होंने word, locksmith भी लिखा है, बोला है. कोई भी एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट का आपको सहायता चाहिए सर्च के अंदर. अभी सर्च टीम तो आएगा ही आएगा, मैं बोलता हूँ पूरा एक्सपर्ट का फौज भी आएगा. सर लगता ही है उनको जैसे स्क्रैप काउंट करना है तो वो ऑफिसर थोड़ी काउंट करेंगे, उनको तो लाना क्या नहीं, दोबारा बोलिए क्या करना है. बहुत बार वो स्क्रैप वगैरह चेक करते ना, काउंट करते फैक्ट्री में जाके. मैं नहीं, चिटले साहब आगे साहब को बेचारों को यात्रा कर रहे हैं. चिटले साहब पता है क्या है, देखिए इसमें ऐसा होगा कि मैं इसको अपने तरीके से बोलता हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में ज्यादातर काम सर्च सही जगह किया है कि जिसके ऊपर सर्च होती है पहले तो उसकी पीड़ा वही जान सकता है जिसपे सर्च हो रही है. आप सोचिए रामचरितमानस में भी लिखा है जिसकी पीड़ा है वही जानेंगे. आप उस सर्च वाले के यहाँ आप सोचिए कि आपको इतना क्या लग रहा है कि आप कारपेंटर भी लेकर आएंगे, लॉकस्मिथ भी लेकर आएंगे, आप डिजिटल फॉरेंसिक वाले, आप व्हाट यू आर शोइंग. और इसका पर्पस आपको नेबुलस नहीं है, ये बड़ा ऐसा नहीं है कि आपकी मदद करने के लिए लाया जा रहा है. उसका पर्पस जो मुझे लगता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट चिटले साहब, आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड, उसका पर्पस कहीं ना कहीं उस आदमी पे जिसके ऊपर सर्च हो रही है उसको कहीं ना कहीं ये शो करना है कि भैया तू अगर फॉल इन लाइन नहीं करेगा तो यू आर ऑल इज नॉट वेल विद यू. सी व्हाट यू आर शेइंग कि आप जिस दिन सर्च करने आ रहे हैं तो उस दिन आपको कारपेंटर की भी जरूरत पड़ेगी, लॉकस्मिथ की भी जरूरत पड़ेगी, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टर, सब दुनिया जहान के सारे लोगों को ले आएंगे मेरे यहाँ. और मैं और वो क्या करेंगे, आपको पता क्या करेंगे काशीनाथ जी, वो ये बात में इंश्योर कराएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा सरेंडर करें. सर का वजन पांव पे ही आता है, सर का वजन ऊपर नहीं जाता है. सो if it is done for good, no problem, no agitation. But our experience tells us कि इस तरीके का पावर देना और एक चेक एंड बैलेंस भी ना ज्यादा होना. अभी कोई भी आदमी एक्सपर्ट आपके यहाँ आएगा और वो आपको बोलेगा कि देखो आपके यहाँ तो इस चीज का वैल्यू है. सी उन्होंने एक और बात लिखा है कि हम सर्च के टाइम पे ही डोमेन एक्सपर्ट से सारा वैल्यू कराएंगे सब चीजों का. सर्च इज ए बिगिनिंग ऑफ द रोड, नॉट द एंड ऑफ द रोड. आपको वैल्यूएशन कराना, आप असेसमेंट में कराइए, आप सर्च में सब कुछ वैल्यू क्यों कराना चाह रहे हैं? क्यों आप बताइए क्यों कराना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूं आपको कि उसी समय वो ऑन स्पॉट असेसमेंट के लिए कि आपको अनडिस्क्लोज इनकम उसी दिन पता लग जाए और उसी दिन आप मेरे को बोले कि आपके पास इतना पैसा अनडिस्क्लोज है, और वो भी हवा में है, नोशनल, हाइपोथेटिकल, वैल्यूएशन बेस्ड. सो somebody can say, Kashinath ji, this change of 132 is a right change. Department should have all powers to bring anyone. अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिए मैंने कई सेमिनार में बोला, आपने बोला ना गोयल साहब कुछ कराना वैल्यू तो लाएंगे ही. मैं आपको पूछ रहा हूं दादा कि अगर मैं अपना वैल्यूएशन, अपना एक्सपर्ट लाना चाहता हूं काउंटर, तो मैं ला सकता हूं क्या? ये क्यों नहीं मिल रहा कि आपको अगर उस वैल्यू एक्सपर्ट को, अरे ये क्या बात हुई, आप अपना एक्सपर्ट तो ले आएंगे, मैं नहीं ला पाऊंगा अपना. फिर आप फेयर रखिए उसको. फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा एक्सपर्ट जो कहेगा वही भगवान है? आई एम सॉरी, देयर हैज टू बी सम बैलेंसनेस ना, ऑब्जेक्टिवनेस. और दूसरा बात, वो एक्सपर्ट अगर गलत कर देता है कोई चीज, भैया वैल्यूएशन इज नॉट ए साइंस कि कोई वैल्यू कर रहा है काशीनाथ जी किसी चीज को, उसके बेस पे आप मेरे पे प्रेशर बनाकर अप्रेजल रिपोर्ट बड़ा उल्टा पुल्टा बना देंगे. अप्रेजल रिपोर्ट समझते हैं ना आप सब लोग? इन सब से क्या होगा? इन सब से वो अप्रेजल रिपोर्ट बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा. अभी आप समझ गए शायद. I'm saying openly, I have no, sorry, and with due respect, no offense, but it is based on my experience, it is based on court rulings, that more these powers are given, more instances have come to notice that they are misused and they are abused, sir. So this 132 change, I am yet to see that institute should come with some suggestion to the government, humble suggestion, that this power should be sensitized. Rather than giving them more power, they should be given restricted power, sir. I am in favor of that, sorry. So I said it, section 132 change it looks to be a very small change, but it can have its own impact. मैंने आपको बताया काशीनाथ जी, जिनके ऊपर भी सर्च होती है वहां पर सर्च टीम डोमिनेट करती है, सर्च जिसके ऊपर होती है वो डोमिनेट नहीं करता है. और आप सोचिए सर्च टीम ही इतना डोमिनेट करती थी, जब उसके साथ बहुत सारे एक्सपर्ट आएंगे वो कितना डोमिनेट करेंगे.
सर वैसे भी वो बेनामी वगैरह सब लेके आते हैं। अब दादा सोचिए ना, हाँ ये सारी फौज, सी मैंने आपको क्या बोला, अगर ये अच्छे के लिए हो, जस्टिस के लिए हो, एक फेयरनेस के लिए हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर उसका पर्पस सिर्फ ये है कि डिपार्टमेंट की व्यू को सही कर बताना है और फेयरनेस को खत्म करना है या फेयरनेस को पीछे छोड़ना है, आई होप यू गेट माई सेंस। दैट इज वाई आई एम सबमिटिंग सर, इट नीड्स टू बी समवेयर कि इसमें ऐसा ना हो कि मेरा भी वैल्यूएशन। अच्छा, मैं एक और सजेशन दे रहा था सर, आप भी सुन रहे हैं और आप चिटले साहब को भी बताइएगा कि इसमें एक सजेशन हम दे सकते हैं कि जब आप चाहते हैं कि इतने सारे एक्सपर्ट आए, मान लीजिए कि व्हाई नॉट डिपार्टमेंट मेक्स वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रोसीडिंग्स, कि ताकि दूध का दूध पानी का पानी रहे कि किस तरीके का माहौल सर्च में क्रिएट होता है। भाई साहब, कि आप एक्सपर्ट लाने की बात तो कर रहे हो दुनिया जहान के, कि वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट, आप ये तो सोचो कि पहले जो आप प्रोसीडिंग कर रहे हो उसकी फेयरनेस के लिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। आज हमारे यहाँ पुलिस में सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि हर एक पुलिस स्टेशन में वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। क्यों बोल रहा है? वो क्यों नहीं हो रहा काशीनाथ जी? व्हाई नॉट दैट? So my point is there should be some balanceness, sir. प्रेशर कैसे करेंगे अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो? अरे सर, आप मेरे से क्यों पूछ सकते? मैं देखिए, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरा हम्बल सजेशन है, छोटे आदमी का साइज माइंड का भी छोटा होता है। मैंने क्या बोला शुरू में भी कि हम आप लोग बुला लेते हैं, ऐसा बोलते हैं, वो अलग है, पर अपने को समझ में नहीं आता ज्यादा। अपने को तो बड़ा जैसे होता है ना, छोटा आदमी समझता है, बच्चा समझता है, ऐसे समझते हैं हम। सेक्शन 142 सर। So point is this, sir, section 142, I believe again is a provision which has been a subject matter of a real concern for all of us as chartered accountants. इसके दो पॉइंट है सर। सेक्शन 142 में स्पेशल ऑडिट का पावर पहले से था, बहुत पहले से। अभी उन्होंने उस पावर को इतना एक्सपेंड कर दिया सर कि वो बोलता है कि साहब अभी आपका कोई भी इन्वेंट्री है जो आपका किताबों में है, उसको उनको लगता है वैल्यूएशन आपने अंडर वैल्यू किया है, तो उसका अंडर वैल्यूएशन को पकड़ने के लिए वो कॉस्ट अकाउंटेंट को रेफर कर सकता है। आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, मान लीजिए आपने एक बिजनेस का बैलेंस शीट बनाया, उसमें सीए साहब ने देखा कि कास्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस करके आपने वैल्यू कर दिया। अब उस वैल्यू को एओ साहब को लगता है गलत है, तो वो किसको भेजेगा केस को? कॉस्ट अकाउंटेंट को। वो एक अलग आपस एक बहुत सीरियस इशू है कि क्या आप हमारे एक एक्सपर्ट के काम को दूसरा एक्सपर्ट जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसको भेज सकता है ऐसा। दूसरा पॉइंट इसमें काशीनाथ जी बहुत सीरियस ये है, इस चेंज को करने के पीछे उन्होंने मेमोरेंडम में क्या लिखा है? परमानेंट डेफरल ऑफ टैक्स फ्रॉम अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आप सोचिए, जब आप क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं और लेट अस से क्लोजिंग स्टॉक को मैंने वैल्यू किया कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस से एक पर्टिकुलर वैल्यू, और अगला साल उसी ओपनिंग स्टॉक को ले लिया मान लीजिए, तो डिपार्टमेंट को लगता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक का जो मैंने वैल्यूएशन किया एसएससी ने वो कम वैल्यू पे किया, ज्यादा होना चाहिए। मैं ये पूछता हूं सर, और उसके लिए उन्होंने ये पावर जो नया पावर है यूज कर लिया, क्या किसी के क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू कम दिखाने से प्रॉफिट कम हो सकता है? ये क्वेश्चन है। इनकम कम हो सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज क्योंकि आपका अल्टीमेटली आज अगर आपने कम वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक लिया है तो वो अगले साल जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दैट इज माई पॉइंट। तो सो ये लॉजिक देना कि आप सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। क्लोजिंग स्टॉक को मैं वैल्यू इसलिए करता हूं कि मेरा अकाउंट्स का मैचिंग हो एज पर ट्रू एंड फेयर व्यू, और उसका साउंड प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने और हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल में तो शुरू से लिखा हुआ है AS2 में जो हम पढ़ते थे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो उसको आपने अगर आज सी वैल्यूएशन इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। अभी आपके हिसाब से किसी चीज का वैल्यू 10 रुपया है और किसी के लिए उसका रुपया वैल्यू ज्यादा है, तो काशीनाथ जी क्या होगा उसमें मेरा केस का एडिशन हो जाएगा क्या उस अमाउंट का? कभी भी नहीं हो पाएगा, सॉरी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कई जगह कि वैल्यूएशन ऑफ अंडर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन से कोई प्रॉफिट नहीं निकलता है, वो तो एक न्यूट्रलाइज हो जाता है, रेवेन्यू न्यूट्रल होता है बाद में। तो कहने का मतलब ये सर, ये चेंज जो है ये सबसे खतरनाक चेंज इसमें से चेंज है सर। सेक्शन 142 का ये जो चेंज है जिसमें स्पेशल पावर दी गई है एओ को कि आपका केस कॉस्ट अकाउंटेंट को रेफर हो जाए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, इट्स ए वेरी ट्रिकी पावर। इट कैन बी यूज्ड इन ए वेरी डिफरेंट वे सर, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज नेवर एन एग्जैक्ट साइंस ना। और अभी आपका वैल्यूएशन कराकर सामने वाले से ज्यादा का वैल्यूएशन करा के आ गया तो क्या आपका इनकम में एडिशन हो जाएगा स्ट्रेट वे? आंसर शुड बी नो। So this change has to be, Kashina ji, again looked with some serious what you say inquisitiveness and serious application of mind कि अभी इसका क्या होगा। अभी तो ऐसा होगा, मान लीजिए कि जितना भी बैलेंस शीट में डिपार्टमेंट को क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है तो उनके लिए रडार में आ जाएगा पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक रडार पॉइंट।
और उसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट को केस जाएगा, खर्चा आपको करना पड़ेगा। कल को स्पेशल और वो कॉस्ट अकाउंटेंट जो स्पेशल कॉस्ट अकाउंटेंट है, स्पेशल कॉस्ट अकाउंटेंट है, उन्होंने आपका वैल्यूएशन ज्यादा करके भेजा तो आपके ऊपर बहुत आफत आ सकता है। तो सो सेक्शन 142 चेंज इज ए सीरियस चेंज। इसमें एक ही सॉलेस है काशीनाथ जी कि आपका केस स्पेशल ऑडिट में कॉस्ट अकाउंटेंट को भेजने से पहले और उनका रिपोर्ट आने के बाद दोनों स्टेजेस पे आपको नेचुरल जस्टिस मिलेगा। आई रिपीट, आपका केस स्पेशल कॉस्ट अकाउंटेंट को रेफर करने से पहले न्यू सेक्शन में आपको नेचुरल जस्टिस दिया जाएगा कि व्हाई नॉट योर केस शुड बी रेफर्ड देयर, दैट इज रिटन आई बिलीव इन द लॉ, एंड व्हेन द रिपोर्ट कम्स देन आल्सो यू विल बी गिवन ए कि उसका रिपोर्ट आपका खिलाफ यूज करने से पहले भी आपको प्रॉपर नेचुरल जस्टिस मिलेगा। सेक्शन 132 हो गया, 142 हो गया। 148 में सर एक बहुत टिपिकल चेंज आप सब नोट कर लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। 148 में आप पहला रिटर्न भरते थे तो 30 दिन का टाइम था आपके पास रिटर्न भरने का 148 की नोटिस का काशीनाथ जी। अभी उसको 3 महीने और एडिशनल टाइम एज गिवन बाय द एओ ऑन योर एप्लीकेशन। नया लॉ में 148 में जब आप रिटर्न भरेंगे, जब ये लॉ पारित हो जाएगा तो उसमें उनको 3 महीने का टाइम आपको दिया गया है और साथ में आप उस टाइम को बढ़वा भी सकते हैं एप्लीकेशन के द्वारा। और अगर आप इन 3 महीने के बाद रिटर्न भरेंगे या एडिशनल टाइम के बाद भरेंगे तो उस रिटर्न को नॉर्मल रिटर्न नहीं माना जाएगा, इनवैलिड रिटर्न माना जाएगा और आपको 143(2) नहीं मिलेगा फिर। मतलब कि नए लॉ में उन्होंने क्लियर कर दिया अमेंडमेंट में अभी इस बात में को कि अभी आपको 148 का रिटर्न टाइम से भरना है। टाइम से मतलब 3 महीने के अंदर और एडिशनल टाइम में, और आप नहीं भरेंगे मान लीजिए तो वो रिटर्न आपका नॉन एस्ट हो जाएगा। 139 का वैलिड रिटर्न नहीं माना जाएगा, उसके लिए 143(2) देना जरूरी नहीं होगा। 149 में उन्होंने कुछ टाइम लिमिटेशन के लिए डिपार्टमेंट को कुछ ग्रेस पीरियड और विंडो पीरियड और ऐड किया है कि ताकि डिपार्टमेंट के पास जब सर्च और सर्वे से संबंधित इंफॉर्मेशन आता है तो कुछ 15 दिन का टाइम कम से कम अवेलेबल रहे। तो दैट इज ए चेंज ऑफ सेक्शन 149। देन कम सेक्शन 151। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब नोट कर लीजिए। 151 में उन्होंने बोला है कि जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूवल देगा 3 साल के अंदर होगा तो सीआईटी अप्रूवल देगा, 3 साल के बाद होगा चीफ कमिश्नर देगा। उसके लिए जो सेक्शन 149 के प्रोवाइजोज है वो भी सेक्शन 151 के साथ पढ़े जाएंगे। आई रिपीट, सेक्शन 151 के अंदर 3 साल देखने के लिए और 3 साल के बाद देखने वाला पीरियड के लिए मान लीजिए उसको 149 का जो 3 साल देखा जा रहा है वैसे ही जैसे 149 के प्रोवाइजो में देखा जा रहा है वैसे ही 151 में देखा जाए, ऐसा उन्होंने कर दिया। ये चेंज भी बड़ा टिपिकल है। 153 का चेंज सर, कभी डिपार्टमेंट बोल देता है, गवर्नमेंट बोल देता है कि 12 महीने में असेसमेंट होगा, कभी 9 महीने में होगा, कभी 12 महीने में होगा। पहले तो उसको याद रखना ही बड़ा मुश्किल है। फिर दूसरा बात सर इसके अंदर एक चैलेंज ये है कि डिपार्टमेंट का पॉलिसी क्या है। अभी आप क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन 153 में कि असेसमेंट का टाइम लिमिट साहब 9 महीने अभी हमको कम जमता है, इसको 12 महीने कर दिया 153 सेक्शन के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। तो पहले 9 महीने था, फिर उससे पहले कभी 12 महीने था, तो ये कभी 12, 9, 12 ऐसा होता रहता है। अभी 12 हो गया फिर से। सेक्शन 155 पे आ जाते हैं सर। 155 इज ए सेक्शन विच डील्स विद रेक्टिफिकेशन, ऑटोमेटिक रेक्टिफिकेशंस। नाउ 155 में 2 सबसेक्शन ऐड किया है मान लीजिए, सबसेक्शन 19 एंड सबसेक्शन 20। सबसेक्शन 19 में उन्होंने पावर दिया है एओ को, आप शुगर केन वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो आपको अगर कोई बेनिफिट लेना है जो आपको खर्चा पहले नहीं मिला है, जो आपने फार्मर को दिया था, पुराने सालों का खर्चा है, आपको डिसअलाउ हो गया था 2016 से पहले का है, तो सेक्शन 155 सबसेक्शन 19 में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है काशीनाथ जी। उसमें आप पुरानी असेसमेंट में जो आपको खर्चा नहीं मिला है वो आप 155 सबसेक्शन 19 में जाकर क्लेम कर सकते हैं। सर एक्चुअली होता क्या था, जो प्राइवेट शुगर फैक्ट्री है ना उनको एक्सपेंसेस आना होता, लेकिन वो शुगर फैक्ट्री कोऑपरेटिव को नहीं आना होता, इसलिए वो एक चेंज आया। हाँ तो अच्छा चेंज है, ये मैग्नानिमस चेंज है। यू आर राइट। 155 यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। 155 सबसेक्शन 20 उसमें उन्होंने बोला कि आपने एक इनकम को मान लीजिए एक्रूअल सिस्टम में आपने दिखा दिया, लेटर से आपने अपना इनकम को आईटीआर में दिखा दिया और उसको ऑफर कर दिया। जिसने आपका टीडीएस काटना था उसने बाद में जाकर टीडीएस काटा कैश बेसिस पे, तो उसका क्रेडिट देने के लिए आपको कि ताकि आपका अगर टाइम लिमिट निकल गया रिवाइज रिटर्न वगैरह का, तो उन्होंने एक सेक्शन डाला है 145 में सबसेक्शन 20 कि लेटर से आपने रिटर्न ऑफर कर दिया इनकम एक्रूअल बेस पे, सब्सिक्वेंटली आपका टीडीएस कटता है, उस टीडीएस क्रेडिट को आपको देने के लिए उस साल में जिस साल में आपने ऑफर किया है उसके लिए 155 सबसेक्शन 20 में आप जाकर एओ को अप्लाई कर सकते हैं और आप टीडीएस क्रेडिट ले सकते हैं जो आपको सब्सिक्वेंटली कटा है। आई होप इट इज क्लियर। तो 155 में 2 चेंजेस हैं सर, ऑटोमेटिक रेक्टिफिकेशन वाले में सबसेक्शन 19 एंड सबसेक्शन 20। नाउ आई क्विकली कम टू टीडीएस सेक्शन सर। टीडीएस में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं 194N।
जो 194 एंड में टीडीएस का वो कैश विड्रॉवल वाले पे है ना, उसमें 1 करोड़ का लिमिट की जगह 3 करोड़ का कर दिया उसको फॉर कोऑपरेटिव के लिए सिर्फ, कि जो 1 करोड़ कैश निकालने का लिमिट है 194 एंड में, उसको 3 करोड़ पढ़ा जाएगा फॉर कोऑपरेटिव्स। दिस इज स्पेशल इंसेंटिव टू कोऑपरेटिव्स। 194 कैपिटल आर में उन्होंने एक्सप्लेनेशन 2 डाल दिया, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि बेनिफिट इन कैश एंड काइंड दोनों कंक्लूड होगा। 206 AB में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, 206 AB। उसमें आपको याद होगा, मान लीजिए आप सबको, कि पहले उन्होंने अभी बजट में लिखा था कि अभी आप ऐसा आदमी को टीडीएस काटना है जो रिटर्न नहीं भरता है, जिसको भरना चाहिए रिटर्न, तो उसका हायर टीडीएस कटेगा, दैट इज सेक्शन 206 AB। बट उन्होंने ये अब अच्छा चेंज किया है कि उन्होंने बोला कि अगर किसी को रिटर्न फाइलर ही नहीं करना है, उसका रिटर्न फाइलिंग का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उन्होंने बोला उस पर नहीं लगेगा वो सेक्शन 206 AB। आई रिपीट, the person who has no requirement to file the return will not be falling under the trap of under the horizon of 206 AB is the clarification which they have done in this now 206 AB। अब काशीनाथ जी, बहुत ज्यादा लोग इस बात को सवाल मुझसे पूछते हैं और हम सब लोग डिबेट भी कर रहे हैं कि क्या जब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है और आप ओवरसीज टूर पैकेज की बात कर रहे हैं और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में पैसा बाहर भेज रहे हैं, अपना ही पैसा, तो उसमें पहले टीसीएस कलेक्ट हो रहा था 5% से और उसमें थ्रेशोल्ड भी था, अब उसको 20 कर दिया और थ्रेशोल्ड भी शायद नहीं है अभी। आई रिपीट, ओवरसीज टूर पैकेज प्लस रेगुलराइज रेमिटेंस की मेडिकल और एजुकेशन वाले को छोड़कर, तो उस पर टीसीएस पहले किस दर से कलेक्ट हो रहा था? 5% से 5%। अभी कितना से होगा? 20 से। और किस मतलब 20 कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, पता नहीं कितना ज्यादा अमाउंट है होता है। तो आप सोचिए कि ये जो सेक्शन 206C का चेंज है, ये बड़ा डेंजरस चेंज है इन ए सेंस कि इससे क्या होगा कि आपको पहले तो ज्यादा कलेक्शन हो जाएगा, फिर आप अपना रिटर्न भरेंगे, फिर रिफंड क्लेम करेंगे, फिर आपका केस स्क्रूटनी में आएगा, सो ऑन एंड सो ऑन। आप कुछ कह रहे हैं काशीनाथ जी? सर अभी वो सब टूर ऑपरेटर फ्लाइट का अलग देंगे और लैंड पैकेज का अलग देंगे। फ्लाइट पे तो नहीं लगता ना टीसीएस। नहीं, अब सी क्वेश्चन इज दिस डियर कि चलो ओवरसीज टूर पैकेज का मैं समझ सकता हूं कि आपको बाहर जाने वाले लोगों से थोड़ा वो है, सॉरी डॉलर बाहर होता है ना, पर जो पैसा लेटस से मैं अपना बाहर खुद भिजवा रहा हूं सर, एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट, पहले वो 5% ही गलत था, ये 20% कैसे जस्टिफाई हो सकता है? आई होप यू गेट माई पॉइंट ऑफ व्यू। सी देयर इज ए सेंस, मेडिकल और एजुकेशन को छोड़ के आप ये कैसे, उसको आप कह रहे हैं वो अलग हो गया। अभी आप बोलते हैं कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में जो पैसा मैं बाहर रेमिट कर रहा हूं उस पर टीसीएस 20% होगा, तो 20 तो सर इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इट्स ए वेरी हेफ्टी अमाउंट। I believe we must represent this change from direct tax committee कि this 20% amount is arbitrary. It has to be rationalized, sir. This can humble suggestion if you feel it, आप उसको नोट कर लीजिए। तो 194 capital N, 194 capital R, 206 AB and 206C. These are the 4-5 typical changes in the TDS section, sir. बीच में 2-3 सेक्शन मेरा अभी आपको वो रह गया, आप लिख लीजिए उसको। 115 BAC सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोल दिया था, मुझे समझ में नहीं आया, मैं लिखवा रहा हूं। 115 BAC, वो नॉन न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड, मेरे को नहीं आता भैया ये समझ में ऐसा चेंजेस है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आया ऐसा है सर। अभी क्या होता है मान लीजिए, बहुत लोग बोलेगा कि क्या होगा भैया, अपने को नहीं आ रहा है। सी पालकी वाला साहब जब थे, या कोई भी विद्वान व्यक्ति को आप पढ़ेंगे तो कहता है कि सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि आप चीजों को सरल रखिए, अगर आपको नहीं देना है बेनिफिट तो बोलिए ना, आप ऐसा क्यों घुमा रहे हैं जलेबी की तरह मुझे? तो दैट आई डोंट थिंक शुड बी डन 115 BAC। अगर आपको बेनिफिट नहीं देना है, आपको सबको उसको बोलना है कि भैया आप बिना इंसेंटिव के लीजिए, ठीक है, आप मत दीजिए बेनिफिट काशीनाथ जी। बट आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आप, देखिए सी विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक तरफ तो आप 43B में ऐसा चेंज कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को जो आप पेमेंट करेंगे तो हम 43B डालेंगे, मतलब और एक्ट की चीजें आप इनकम टैक्स एक्ट से कवर कर रहे हैं, और यहां आप कह रहे हैं कि हम सोशल सिक्योरिटी को ज्यादा नहीं मानते। तो दोनों चीजों में विरोधाभास है कि जहां उनको ठीक लगता है तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से उसको डाल रहे हैं, आपको डिसअलाउ भी कर रहे हैं, आपको पिनलाइज भी कर रहे हैं, बट जहां आपको उनको नहीं देना है तो वो साफ, आपको ऐसा साफ भी नहीं बोल रहे, बट आपको कुछ बोल रहे हैं ऐसे करके। वो कोई हमारा दोस्त बोल रहा था ये बड़ा स्वीट टॉफी की तरह, चॉकलेट की तरह, इसको ध्यान से लेना पड़ेगा सर आपको। 115 BAC जो डिफॉल्ट रेजिम है, सॉरी इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, आगे 115 BAE नया सेक्शन 115 BAE जो न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेंगी 1/4/23 के बाद और 31/3/2024 से पहले, और वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगी, नहीं होंगी न्यू, तो उनको 15% का दर से टैक्स लगेगा 115 BAE।
न्यू कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटीज, इट्स ए न्यू सेक्शन। और ऑनलाइन गेम के लिए उन्होंने एक सेक्शन डाला है अलग से 115 BBJ। अभी ऑनलाइन गेम बहुत ज्यादा हो गया तो उन्होंने उसका सेक्शन अलग बना डाला है। वो कह रहे नॉर्मल लॉटरी विनिंग में नहीं आएगा, 115 BBJ में आपको 30% नेट विनिंग पे देना होगा टैक्स। तो ये 3 सेक्शन आपने नोट कर लिए। मान लीजिए 115 BAC, 115 BAE एंड 115 BBJ। BBJ का मतलब ऑनलाइन गेम नेट विनिंग पे, और उसके लिए TDS सेक्शन अलग से भी डाला है उन्होंने साथ में TDS चैप्टर में। सो लास्ट में आई एम टेलिंग 2-3 सेक्शन सर। सेक्शन 170 कैपिटल ए में जो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के वजह से मॉडिफाइड रिटर्न का कंसेप्ट है, उन्होंने उसको रैशनलाइज किया सेक्शन 170 कैपिटल ए के अंदर। सेक्शन 246 में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें ज्वाइंट कमीशन अपील का कंसेप्ट आ गया, वो मैंने शुरू में बोल दिया था। 269 SS और 269 T का भी चेंज नोट कर लीजिए। कॉपरेटिव के लिए उन्होंने उसको 2 लाख कर दिया लिमिट को, 269 SS और 269 T। और फाइनली जो आपका TDS का प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि जो लोग TDS को ढंग से नहीं ले रहे हैं काइंड की पेमेंट पे, उन पे भी TDS का प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है सर 276B में। So with all this, Kashina ji, I believe I have fairly covered in the time, although I was late. So I tried my best to, I was rushing. मेरा और टाइम का थोड़ा सा रेस चल रहा था। I tried to do justice. आप कोई क्वेश्चन वगैरह है और accordingly you can take up some questions, selected questions जो भी हैं, and then I will take your permission, sir. And I'm thankful to all my friends. I will just close with one Ramcharitmanas चौपाई. I always मैं काशीनाथ जी हमेशा आजकल क्या करता हूं कि जब अपनी कोई भी बात कहता हूं, या अभी शुरू में मैंने कहना भूल गया था, रामचरितमानस की चौपाई जरूर बोलता हूं। उससे भगवान राम का आशीर्वाद हमें मिलता रहे और प्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र निभावा। जाहि विधि होए नाथ हित मोरा, करूं सुबेगी दास मोटोरा। जय श्री राम। और आप सबको धन्यवाद सर। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो, प्लीज काइंडली एक्सक्यूज मी। ये क्या चीजें मैं हमेशा बोलता हूं कि सर बजट डिस्कशन इज ए वेरी चैलेंजिंग टास्क इन ए सेंस दैट कि I one can never claim that I have done 100% justice to the duty given to me. Thank you all of you. Sir, we have some questions. First question is, would TDR arising out of own plot sold separately would become taxable now in view of amendment of definition of cost of acquisition? Yes, sir. This is an apprehended point. Yes, the apprehension of the learned purist is right. This can become now taxable due to the sense that they have now made this wider amendment in section 55 to deem the cost nil, which I was submitting. उमेश माड़ी जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? मैं ही पूछूं? हाँ सर, दूसरा एक क्वेश्चन था 43B में जो डिसअलाउंस होता है, डिले पेमेंट इन MSME, तो उसमें कुछ कैपिटल एसेट परचेस किया तो उसका डेप्रिसिएशन भी डिसअलाउ होगा? और नहीं, डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंडिचर दादा। उस पर कोर्ट का ऑर्डर है, पुराना सुप्रीम कोर्ट का। कैपिटल गुड परचेस किया तो डिसअलाउ होगा क्या? अरे दादा मैं वही समझा रहा हूँ। जैसे आपने यू गो बाय स्टेप, आपने कैपिटल एसेट खरीदा, आपने उसको 43B में आपका सिर्फ वो खर्चा डिसअलाउ हो रहा है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। आप समझे, जो डेप्रिसिएशन है सेक्शन 32 में जो आपको मिलता है 32 में, वो आपका एमोटाइजेशन है, वो एक्सपेंडिचर नहीं है दादा। तो सेक्शन 32 के एक्सपेंडिचर के ऊपर आप 43B नहीं लगा पाएंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप इतना तो कर सकते हैं कि गोयल साहब मैंने 43 में आपने कैश में कर लिया, उसके एक्चुअल कॉस्ट कम कर दी, वो अलग चीज है। बट 43B में आप डेप्रिसिएशन को पेमेंट थोड़ी ना हो सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या आप तो समझते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेप्रिसिएशन इज एन ऑब्सोलिसेंस. Depreciation is due to reduction in the economic value of the asset. Depreciation is amortization. Depreciation is not expenditure. And 43B is to disallow expenditure, Dada. Any change in the long-term capital gain on sale of listed shares? नहीं सर, वो तो मार्केट लिंक डिबेंचर वाला चेंज था बस, 50AA वाला. How would reduction under section 54 would work for capital gain at rupees 25 crore being reinvested in a house? सर जो आदमी रेलवे में लिखा होगा तो वो पहाड़ा यहां लगेगा, तो आप 10 करोड़ से ऊपर का आपको नहीं मिलेगा सर एग्जेम्पशन, 10 करोड़ तक का ही मिलेगा. Whether repayment of borrowings loans taken prior to 31st March 21 can be considered as application?
सर ये चीज अब क्या है कि दादा देखो काशीनाथ जी, ये प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव वाला जो पंगा है ना, ये वाटिका टाउनशिप का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में, जिनका भी लर्नेड क्यूरीज का क्वेश्चन है वो पढ़ लें, 367 ITR 466, कि आप किस चीज को रेट्रोस्पेक्टिव मानते हैं और किस चीज को प्रोस्पेक्टिव मानते हैं। देयर इज ए 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 367 ITR 466 वाटिका टाउनशिप, तो उसके हेल्प से आपको कुछ प्रकाश मिल सकता है। और दूसरा देखिए दादा, मैंने आपको पहले बता दिया, ये चैरिटेबल ट्रस्ट का केस मैंने आपको पहले ही बोल दिया, भैया इस पे एडवाइजरी आना चाहिए और इसका एक सिंप्लीफाइड कोड होना चाहिए, और वो भी वो होना चाहिए प्रैक्टिकेबल हो और इम्प्लीमेंटेबल हो और इजी टू अंडरस्टैंडेबल। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेदर सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल फॉर प्रोफेशनल रिसीट रिसीव्ड इन कैश 49 lakhs। कैश मतलब प्रोफेशनल फीस 49 lakhs कैश में मिला है। बट उसमें तो उसका रेट का, उसमें कहाँ बार कहाँ है, बार का देयर इज नो बार। वो तो हाँ, सी क्वेश्चन इज दिस कि जो क्वेश्चन दोबारा पढ़िए आप, अगर किसी को प्रोफेशनल फी 49 लाख कैश में मिला है तो 44 AD एप्लीकेबल है क्या उसको? ADA, हाँ, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। हाँ, मैं समझ गया दादा। देखिए इसमें कहीं ये थोड़ा लिखा है कि आपका, वो तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में अगर आपका 50 लाख से कम है कैश में है तो उसमें वो तो रेट तो उसका 50% ही है ना सर, जो दिखाते हैं आप। हाँ, That amendment is applicable for 44 AD only. नहीं, सी 5%. आई बिलीव देयर इज सम कंफ्यूजन। 44 ADA का चेंज ये है कि 50 लाख की जगह वो एलिजिबल अमाउंट 75 लाख हो जाएगा अगर आपका 5% तक का टोटल रिसीट साइड का 5% तक का अमाउंट कैश में है, 95% इजिकल। अब आप 75 लाख में नहीं जाते हैं तो 50 लाख तो है ही, 50 लाख खत्म थोड़ी ना हो गया। तो 50 लाख तो आप कैश में लेते हैं तो 50% दिखाते हैं, तो राधे राधे, हरे कृष्णा, बाकी बिहारी लाल की जय हो। वेयर इज द प्रॉब्लम? सर वो एसएमई का जो कुछ मैकेनिज्म यूटिलिटी है क्या चेक करने के लिए कि वो कवर है कि नहीं? सर मेरे को नहीं पता ये सब क्वेश्चन, ये तो मुझे आप पूछ रहे हैं, तो भी क्या होगा कि ये मुझे अभी आप लोग बताएंगे, मैं तो भरता भी नहीं, अभी आएगा धीरे धीरे सब यूटिलिटी बनेगा। अब तो क्या है दादा, सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है ऑन ए हम्बल साइड, एंड यू विल डेफिनेटली हैव सम सपोर्ट सिस्टम वेयर यू विल बी एबल। सी मुझे तो अभी इतना समझ में आ रहा है कि आप कभी भी किसी एंटरप्राइज से डील कर रहे हैं, जिसको MSME मानना है और जिसको नहीं मानना है, उसमें आपको बहुत ज्यादा अभी मुझे ऐसा लगता है एक जगह तो काशीनाथ जी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बट ये चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट भी कर रही है माली जी। कि जब आप इनकम टैक्स के अंदर और लॉस को ओवरलोड कर रहे हैं या सुपर इंपोज कर रहे हैं, तो उससे आपकी जो उसकी क्या कहते हैं उसको, कैसे क्या कहते हैं उसको सर, आप जब आप उसको प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो वो बहुत दिक्कत भी आती है उससे, दैट इज द पॉइंट। और उसमें एरर्स के भी चांसेस हो सकते हैं, जेन्युइन एरर्स के भी। मान लीजिए आपने खर्चा क्लेम कर लिया, सर आप काशीनाथ जी आपने खर्चा क्लेम कर लिया और आप बाद में डिसअलाउंस हो गया, उसमें पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी, दिस ऑल क्वेश्चन। और डिपार्टमेंट को तो हर एक डिसअलाउंस पे अंडर रिपोर्टिंग का पेनल्टी चाहिए। Yes, penalty. सर और एक एडवांस पेड टू माइक्रो एंड स्मॉल इज आल्सो अलाउएबल इवन विद आउट ऑफ एनी बिल्स, so we can make any tax planning for paying some advances. It's a question too. देखिए ये लोग तो बहुत ही ज्यादा, हमारा दोस्त जो क्वेश्चन पूछा है ना, इनका दिमाग अलग ही है अभी तो। जो ये आगे दौड़ रहा है, ये मेरे कई कदम आगे दौड़ रहा है। उनको कहना है, वो बात सही सोच रहा है कि मैं अभी एडवांस टैक्स दे देता हूँ और 43 में मैं सारा अमाउंट कवर कर लेता हूँ। भैया देखिए लिटिगेशन का नाम समझ के चलिए, लिटिगेशन एक ऐसा साढ़े साथी है, वो किसी के पीछे पड़ जाता है तो कई बार बहुत बुरा भी हो जाता है। पर एक बात तय है कि जो भी काशीनाथ जी इस तरीके का स्टैंड लेता है एसएससी, उसको अपना सवारी सामान का खुद जिम्मेदार है, मैं ऐसा बोलता हूँ। सर अभी एक मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अभी एक नया सिनेरियो कि जब सेल डीड करते हैं कुछ पोर्शन यानी 60% 70% इन कैश देते हैं और 30% इन काइंड, यानी वो कुछ बिल्टअप एरिया वगैरह प्री डिसाइडेड रहता है, तो उसमें वो टैक्सेशन का ऑफर एक साल ही करंट ईयर ही करना पड़ेगा या पोस्टपोन कर सकते हैं जो बिल्टअप एरिया मिलने वाला है उसका? पोस्टपोन कैसे करेंगे आप? वो तो कंस्ट्रक्ट, हाँ, लेकिन अभी एक नया सिनेरियो है यहाँ पे, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ही नहीं बोलते, डायरेक्ट सेल। नहीं, बट आप पोस्टपोन, आई एम नॉट सॉरी एबल टू अंडरस्टैंड योर क्यूरी प्रॉपर्ली, सॉरी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? 40,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, मैंने सेल किया बिल्डर को, तो उसने 10 करोड़ का कैश दिया और 5 करोड़ का। उसमें दादा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर होल और पार्ट इज इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वही कैच है मेरे ख्याल से सबसे बड़ा। ओके, कि जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होगा उस ईयर को आप कह रहे हैं मॉड्यूलेट करने के लिए क्या? नहीं, वो
वो जो मिलेगा बिल्टअप एरिया, उसका टैक्सेशन कब होगा? बिल्टअप एरिया जब मिलेगा, यानी जो फ्लैट See, उसमें क्लियरली लिखा है ना, कैपिटल गेन shall be chargeable to income tax as income of the previous year in which certificate of completion for whole or part of the project is issued by competent authority. और वो जो 10 करोड़ मिला है कैश में, वो करंट ईयर ही होगा। दोनों साथ दो अलग अलग ईयर थोड़ी ना हो सकते हैं, एक ही ईयर होगा सर। तो समझो अगर समझो 1 एकड़ का प्लॉट दिया है, उसने अगर 15 करोड़ का कैश लिया और 1-2 फ्लैट ले लिए 2 करोड़ के, वो 4 साल के बाद, तो जब तक वो 2 करोड़ टैक्सेबल नहीं होंगे आपकी, तभी टैक्स हो गए, उसी साल में टैक्स होगा आपका। ये 15 करोड़ भी, हाँ जी, तो ये टैक्स प्लानिंग होगा। आप इसको टैक्स प्लानिंग मानते हो, मैं नहीं मानता सर, सॉरी। क्योंकि मैं इसको मानता हूं, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का एक्सेल इंडस्ट्रीज का ऑर्डर पढ़ा हुआ है 358 ITR 295। if tax rates are same in the years, then there should not be fight ki in which year income is taxable. इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 358 ITR 295 एक्सेल इंडस्ट्रीज। तो आर यू गेटिंग? आई होप नाउ यू गेट माय पॉइंट। यस। तो ठीक है, आप अल्टीमेटली इवेड थोड़ा ना कर रहे हैं, टैक्स अवॉइड थोड़ा ना कर रहे हैं। So I request Sangli branch chairman Umesh Mari to give vote of thanks, formal vote of thanks. It is a great pleasure to all branches to listen to Goyal sir, and thank you for contributing the valued points on the budget. Thank you very much, sir. थैंक यू सर, हरे कृष्णा। थैंक यू सर, वापस पुणे आ जाओ। Yes, आ जाएंगे। करने को। और पुणे आने के बाद सर सांगली भी आ जाएगी। आ जाएंगे सर, आ Yes, जाएंगे। thank you, sir. भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा और काशीनाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा। Yes, sir. थैंक यू मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं काशीनाथ जी। थैंक यू काशीनाथ जी, गॉड ब्लेस Okay, thank you. यू। बाय बाय।